We are starting with one of the important chapter that is called as respiration. So whenever we talk about respiration, we need to understand one thing. What exactly is respiration? So respiration is a process where the organic substances, complex organic substances, are broken down. They are broken down in simple substances. Now when we say simple, it will be simple inorganic substances. ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, सबसे मजेदार बात ये है कि आप जो है कॉम्प्लेक्स को तोड़ रहे हो सिंपल में, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो आप ये कह सकते हो कि रेस्पिरेशन जो है वो एक तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अच्छा, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एटीपी के फॉर्म में। तो एनर्जी स्टोर कहाँ होता है? तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द एनर्जी आर स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। जो भी बॉन्ड्स होंगे, जैसे आप ग्लूकोज कहते हो C6H12O6, तो उसके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड में क्या होती है? सारी एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये याद रखना है कि रेस्पिरेशन में होता क्या क्या है। दो इंपॉर्टेंट इवेंट है। सबसे पहला इवेंट जो रेस्पिरेशन में हम देखते हैं वो है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है। सिंस देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, तो इसे हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कह देते हैं। जब आप कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलोगे तो कैटाबॉलिक का बेसिक मतलब क्या हो गया? तो हम कह सकते हैं दैट दी कॉम्प्लेक्स इज ब्रोकन डाउन टू सिंपल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जिस पे आपको फोकस करनी होगी तो ये है कि जो रेस्पिरेशन है इसमें ना हीट एनर्जी निकलता है। हमने ये पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में हीट एनर्जी ट्रैप होता है, यहाँ पे हीट एनर्जी क्या होता है? निकलता है। फोटोसिंथेसिस में अगर हीट एनर्जी निकल रहा है तो उसको हमने एक्सर्गोनिक प्रोसेस कह लिया था, नहीं एब्जॉर्ब हो रहा था तो एंडरगोनिक कहा था। यहाँ पे रिलीज हो रहा है तो इसे हम क्या कह देंगे? बेसिकली दिस इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस। एक्सर्गोनिक का मतलब ये होता है कि हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। वहीं पे फोटोसिंथेसिस में आपने उसे क्या कह दिया था? जो है एंडरगोनिक प्रोसेस का नाम दिया था। अच्छा, रेस्पिरेशन होता कहाँ है? तो हम ये कह सकते हैं कि टेक्स प्लेस विद इन सेल। अब ये सेल के अंदर होता है तो इसी के लिए मैं इसे एक और नाम दे सकता हूं। मैं इसे कह सकता हूं इट इज इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो यहाँ पे हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। सबसे पहला क्या आ गया कि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है और दूसरा एक इंटरसेल्यूलर प्रोसेस है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है, वो है रिएक्शन, या आप कह लो उसका डेफिनेशन। तो रिएक्शन हम जो है इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। वी विल राइट इट इन दिस वे, C6H12O6 plus 6O2 will break to give you 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है मालूम है? ये कि रेस्पिरेशन में दिस इज नथिंग बट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप ये कह सकते हो C6H12O6 इज नथिंग बट इट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर आपसे किसी ने पूछा कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तब आप कह दोगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ और नहीं है, क्या है? ग्लूकोज है। अब ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, मतलब इट इज अंडरगोइंग व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक एंड एक्सर्गोनिक प्रोसेस वेयर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज अंडरगोज ऑक्सीडेशन। और क्या देता है? इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट।
और इसमें जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 38 एटीपी। तो इसी पैरामीटर के दम पे जो है हम इसका डेफिनेशन डिसाइड कर सकते हैं। तो डेफिनेशन में क्या क्या बोलेंगे? सबसे पहला आप बोलोगे कि रेस्पिरेशन इज द कैटाबॉलिक एंड एक्सर्गोनिक प्रोसेस in which organic compound like glucose undergoes oxidation to give byproduct like carbon dioxide and water and energy in the form of 38 ATP। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है, बेसिकली we need to understand that the glucose is undergoing, very important, it is intracellular oxidation। इंट्रासेल्युलर ऑक्सीडेशन का मतलब ये हो गया कि विद इन द सेल देयर इज ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस। ठीक है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि 1 सेकेंड इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल ग्लूकोज टू, या इनफैक्ट लेट्स टेक इट इन दिस वे, टू ब्रेक 1 ग्लूकोज इंटू व्हाट 38 एटीपी। मतलब एक ग्लूकोज को 38 एटीपी में अगर तोड़ना है तो 1 सेकेंड लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप 38 एटीपी की बात करते हो तो ये 38 एटीपी जो है करस्पॉन्ड करता है 686 किलो कैलोरी को फॉर 1 ग्लूकोज। ओके, सो अगर आप इट इज समवेयर अप्रोक्सीमेटली दिस, देखो 686 किलो कैलोरी किसका वैल्यू है? ग्लूकोज का। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की वैल्यू कितनी है? 686 किलो कैलोरी। अच्छा, 38 एटीपी ये बन रहा है, तो ये कितना किलो कैलोरी हो गया? तो हम कहते हैं 288.8 किलो कैलोरी। तो 686 ग्लूकोज का बना और 288.8 ये बन गया। अच्छा, अब सबसे मजेदार बात जो एनर्जी से रिलेटेड हम सबको आनी जरूरी है। तो जैसे ही आप एनर्जी की बात करोगे तो याद रखना, एनर्जी में जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट रहा है तो ये 2 पार्ट में स्प्लिट अप होगा। 100% ग्लूकोज है तो हमें कह सकते हैं 100% ग्लूकोज स्प्लिट्स अप इनटू 60% एंड 40%। तो जो 60% इसकी एनर्जी होती है ना, वो हीट एनर्जी के फॉर्म में निकलती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, 60% एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्मेट में निकला, जिसने क्या किया? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया। इट इज यूज्ड टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। 40% जो है बेसिकली वो एटीपी के फॉर्म में निकल रहा है। ठीक है, और ये एटीपी जो है बेसिकली एनर्जी है, एंड दिस एनर्जी यू कैन कॉल इट एज केमिकल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हीट एनर्जी तो है नहीं, तो एटीपी के फॉर्म में निकल रहा है, तो हम इसे क्या कह देंगे? हम कह देंगे इसको केमिकल एनर्जी। सो दिस बिकम्स एनर्जी रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अच्छा, अभी सबसे मजेदार बात यह है कि जब आप करेंसी की बात करते हैं, whenever we talk about currency of energy, तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं? एटीपी। एटीपी के बारे में काफी कुछ चीजें हमें आनी जरूरी है। तो द मोमेंट यू टॉक अबाउट एटीपी, याद रखना कार्ल लोहमैन नाम का एक साइंटिस्ट था, समवेयर अराउंड इन 1929 इसने एटीपी के बारे में बताया। और एटीपी क्या होता है? वो हाइड्रोलाइज होता है, तो हम कहते हैं एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव एनर्जी। ठीक है, तो जब एटीपी टूटता है तो वो एडीपी और आईपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब एटीपी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सो इट इज एटीपी। ए क्या है? वी हैव एडिनोसाइन। टी क्या है? तो हम कहते हैं ट्राई। पी क्या है? तो हम कह देते हैं फॉस्फेट। तो एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या एटीपी का कोई दूसरा नाम है? जी हाँ, बिल्कुल है। आप इस एटीपी को एक और नाम से जान सकते हो, उसके लिए हम दूसरा कलर लिख लेते हैं। तो दिस एटीपी इज ऑल्सो नोन एज ट्राइफॉस्फेट ईस्टर ऑफ
ATP is also known as triphosphate ester of adenosine ribonucleoside. ट्राइफॉस्फेट ईस्टर ऑफ एडिनोसाइन राइबोन्यूक्लियोसाइड, ये जो है एटीपी का दूसरा नाम है। अब हमें ना एटीपी का स्ट्रक्चर समझना है, ये बात ध्यान में रखना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एटीपी को अच्छे से ड्रॉ करते हैं और उसको समझते हैं कि केमिकली वो स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे। तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं। एटीपी सबसे पहला जो वर्ड है, हमने इसे क्या नाम दे दिया है, एडिनोसाइन। देखो एडिनोसाइन जो है ना, वो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। एक वर्ड है एडिनाइन, दूसरा वर्ड है राइबोस शुगर। एडिनाइन और राइबोस शुगर जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बेसिकली एडिनोसाइन जो है क्रिएट होता है। अब देखो इसको ड्रॉ कैसे करना है, याद रखना। एक सिंपल सा आइडिया ट्रिक मैं आपको दे देता हूँ। पहला आप एक हेक्सागन बना लो, ठीक है। उसी हेक्सागन के बगल में एक छोटा सा घर बना लो। तो वी ड्रॉ हाउस लाइक दिस, ठीक है। हेक्सागन बनाया, हेक्सागन के बगल में छोटा सा घर, और घर के स्ट्रेट नीचे से आप एक डंडी ले लो नीचे। अब इसके अंदर आप राइबोस शुगर बनाओ। तो राइबोस शुगर आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर अगर आपका हुआ होगा तो उसके अंदर आपने ये बेसिकली पूरा पढ़ लिया होगा। तो ये बन गया राइबोस शुगर। अब इसके अंदर हमें 3 फॉस्फेट जोड़ देनी है। तो ये बना पहला फॉस्फेट, ये बना दूसरा फॉस्फेट, ये बना तीसरा फॉस्फेट। तो हम पीपी लिख देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है, दिस अपर स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा उसे आपने कह दिया एडिनाइन। लोअर स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ दिया इसे आपने कह दिया राइबोस। इन दोनों को अगर आप जोड़ लेते हो तो ये क्या बन जाता है, एडिनोसाइन। अच्छा, अब यहाँ पे ये 3 क्या है, तो अब इसको हम नाम दे देते हैं ट्राई फॉस्फेट, क्योंकि 3 फॉस्फेट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, जो एक फॉस्फेट है उसका बॉन्ड अलग है, दूसरे फॉस्फेट का बॉन्ड अलग है। तो ये जो बॉन्ड है ना, इसे आप कहते हो हाई एनर्जी बॉन्ड। हाई एनर्जी बॉन्ड का मतलब ये होता है कि इसके टूटने से जो एनर्जी निकलेगी वो ज्यादा निकलेगी। और ये दोनों जो हैं बेसिकली ये कहलाते हैं लो एनर्जी बॉन्ड। इनको लो एनर्जी बॉन्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके टूटने से जो एनर्जी निकलेगा वो कम निकलेगा। तो अब उस एनर्जी को जरा देखने की कोशिश करते हैं और उसको समझते हैं लॉजिकली होता क्या है। तो वी पुट इट इन दिस वे। अब आप ध्यान से देखना, वी पुट इट इन दिस वे, एडिनाइन प्लस राइबोस। तो इसको हमने नाम दे दिया एडिनोसाइन। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम क्या बोलेंगे, एडिनोसाइन प्लस फॉस्फेट। एडिनोसाइन प्लस फॉस्फेट, तो इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, जिसको आप शॉर्ट में क्या कह देते हो, AMP। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि AMP में एक और फॉस्फेट आप जोड़ लो, मतलब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट प्लस 1 फॉस्फेट। तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ADP। फिर हम क्या करते हैं, देखो हम करते हैं ADP में एक और फॉस्फेट जोड़ दो। तो जैसे ही आपने ADP में एक और फॉस्फेट जोड़ा तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को बेसिकली आप एक नाम देते हो, ठीक है। वो नाम क्या है, तो हम कहते हैं ATP। तो इस तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा कि ATP का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या है, सबसे पहला ये आपका एडिनोसाइन बना, फिर AMP बना, फिर ADP बना, एंड फाइनली व्हाट यू गॉट इज ATP। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, जब अगर ATP टूटा, देखो ATP टूट रहा है तो आपको एनर्जी मिलना है। तो वो ATP के टूटने पे एनर्जी कैसे मिलती है, क्या मिलती है, जरा उसे समझते हैं। तो हमने ATP ले लिया, ATP को तोड़ा। जब तोड़ा ना तो जाहिर सी बात है हाई एनर्जी बॉन्ड टूटने वाली है।
तो एटीपी अगर टूटा तो क्या बन जाएगा, एडीपी प्लस आईपी। देखो आईपी का फुल फॉर्म आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहला बॉन्ड टूटेगा दैट विल बी हाई एनर्जी बॉन्ड। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही है ना, कितनी निकल रही है मालूम है, 7.3 किलो कैलोरी की एनर्जी निकल रही है। और यही 7.3 किलो कैलोरी की एनर्जी ज्वाइन होकर के एटीपी बन जाती है। फिर ये जो एडीपी है, एडीपी अगर टूटेगा तो आपको क्या दे देगा, तो हम कहते हैं एएमपी प्लस आईपी। तो ये देखो, ये एएमपी प्लस आईपी, ये एएमपी इधर आ गया। तो ये देखो यहाँ पे, अब ये आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पता है। एडीपी टूटा तो कितनी एनर्जी मिलती है, तो हम कहते हैं 4.3 किलो कैलोरी। और जब जोड़ते हो आप तो भी कितनी एनर्जी लगेगी जोड़ने के लिए, तो हम कहते हैं 4.3 किलो कैलोरी। तो बेसिकली ये एनर्जी का ब्रेकअप और स्प्लिटअप है। We are going to talk about site for ATP synthesis, मतलब एटीपी बनता कहाँ है। तो जब आप साइट ऑफ फॉर एटीपी सिंथेसिस की बात करते हो तो हम सब ने ये पढ़ा हुआ है कि जो अल्टीमेट बॉस है एनर्जी बनाने का, उसको हम एक नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है, बेसिकली ये दो वर्ड से है। पहला वर्ड है माइटोस, दूसरा वर्ड है कॉन्ड्रिया। तो जैसे आप माइटोस की बात करते हो तो इसका मतलब हो जाता है थ्रेड। कॉन्ड्रिया की बात करोगे तो इसका मतलब हो जाता है ग्रैन्यूल। सो दीज आर थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल्स यू कैन से। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, तो हम सब कहते हैं उसे पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका जो लेंथ है बेसिकली वो 1 to 4 माइक्रोमीटर है। उसका जो ब्रेथ है बेसिकली दैट इज 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, ये इसका लेंथ और ब्रेथ है। और जब आप माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ करते हो तब आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो चलिए हम पहले इसे ड्रॉ करते हैं, फिर इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और, फिर हम ये ले लेते हैं दूसरा। नहीं ये नहीं चलेगा क्योंकि हमें एक ही लेयर चाहिए ना, तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर जब आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करोगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का दो लेयर है। तो अभी हमने बाहर का तो बना दिया, अब अंदर वाला ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम इनर लेयर बना रहे हैं, दिस इज द इनर लेयर। अब इनर लेयर जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, वो ऐसा फोल्डेड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है। देखो ये इनर फोल्डेड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम एक नाम देते हैं, टेक्निकली दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टे। ठीक है, इसको हम टेक्निकली क्रिस्टे का नाम दे देते हैं। तो ये जो है ऐसे बना, देखो ये बन गया। ठीक है, ये एक पार्ट आ गया। अब यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। एक से रुकिए जरा, इसको बना रहे हैं, टाइम लगेगा। ठीक है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हम ऐसे बना लेते हैं इसको यहाँ पर। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सबको आनी जरूरी है। तो ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो है ना वो भी कंटिन्यूअस नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, वो इस तरीके से इसमें आ जाता है। चलो अब इसके बारे में हम ये बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसका दो मेम्ब्रेन है। तो पहला आप क्या कहते हो, आउटर मेम्ब्रेन। दूसरा जो है आप कहते हो इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है जिसको आप क्या कह देते हो, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है बेसिकली ये दोनों के दोनों
जो है दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, दैट स्पेशल प्रोटीन इज कॉल्ड एज लिपोप्रोटीन। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है कि आउटर मेम्ब्रेन के पास क्या है। तो ना यहाँ से आप समझना कि आउटर मेम्ब्रेन के पास ना इंटीग्रल प्रोटीन्स है, याद रखना, आउटर मेम्ब्रेन हैज इंटीग्रल प्रोटीन्स, और इस इंटीग्रल प्रोटीन्स को हम एक नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज पोरिन्स। अच्छा, पोरिन्स की एक स्पेशलिटी क्या है कि एक सर्टेन मॉलिक्यूलर वेट के सब्सटेंस को मूव करने देता है। तो कितना, तो हम कहते हैं 5K डेल्टन, 5K डेल्टन मॉलिक्यूल्स यानी 5000 डेल्टन के मॉलिक्यूल्स ही इस आउटर लेयर से मूव कर सकते हैं। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन का अगर आपसे किसी ने डायमेंशन पूछ लिया क्या है, तब आप कहोगे 60 to 70 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60 to 70 आर्मस्ट्रॉन्ग इज नथिंग बट द साइज और डायमेंशन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जो इनर मेम्ब्रेन है इट शोज फोल्डेड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये फोल्डेड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम एक नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टे। अब किसी ने पूछा क्रिस्टे क्या है, तब आप कह दो क्रिस्टे इज नथिंग बट इट इज फोल्डेड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर जैसे ही आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाते हो तो बेसिकली आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है जिसे हम सब क्या कह देते हैं, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का जो है अंदर का पार्ट क्या है, तो मैट्रिक्स के अंदर जो है आपको ये मिल जाता है, ये। तो इनसाइड द मैट्रिक्स यू फाइंड दिस, तो हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए। इस डीएनए को आप क्या कहते हो, एम्प्टी डीएनए। एम्प्टी डीएनए मतलब क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब इस डीएनए की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, तो हम कहते हैं इट इज सेमी ऑटोनॉमस, पहली बात। दूसरा जो है इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इट इज सेमी ऑटोनॉमस एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और जितना चाहिए उतना वो अपने आप को बना सकता है। और इसी मैट्रिक्स के अंदर आपको गोल गोल ऐसे राइबोसोम्स मिलते हैं। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर you are going to get a very important structure that is also called as ribosome। अब सवाल ये उठता है कौन से राइबोसोम्स मिलेंगे, तो याद रखना हम हमेशा कहते हैं 70S, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है। और 70S राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है, तो हम कहते हैं इट इज इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब वहीं आप क्रिस्टे के ऊपर अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, इफ यू ऑब्जर्व ऑन द क्रिस्टे, तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है ऐसे। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्रिस्टे के ऊपर देर आर सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट। देखो सब पे होते हैं पर हम कुछ पे बना के दिखा रहे हैं खाली, ठीक है। ये देखो, ये on the cristae you will find this structure। now this structure that you are observing on the cristae, इसको आप क्या कहते हो, तो on the cristae you will find specialized structure called as F1 particles। इवन इसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीजोम्स। इवन इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। F1 पार्टिकल्स है, ऑक्सीजोम से, आप इसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स का भी नाम दे सकते हैं। एंड फाइनली जो है हम डॉट डॉट ये स्ट्रक्चर बना देते हैं, डॉट डॉट कुछ और नहीं, क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम ड्राइंग एज द मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये जो है ना, हम एक क्रिस्टे को बाहर निकालेंगे, वी आर गोइंग टू टेक आउट वन क्रिस्टे आउट, और उसी एक क्रिस्टे को बाहर निकालने के बाद हम ध्यान से स्टडी करते हैं, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है। तो लेट्स चेक इट इन दिस वे, दिस इज वन क्रिस्टे विच इज आउट, और इसी क्रिस्टे के ऊपर ये देखो ये F1 पार्टिकल्स हैं, तो हमने ये बना दिया, तो ये सारे के सारे जो है F1 पार्टिकल्स में काउंट हो जाते हैं। तो ये हमने बना दिया F1 पार्टिकल्स। अब हम एक F1 पार्टिकल को बाहर निकालते हैं। तो जब आप एक F1 पार्टिकल को बाहर निकालोगे तो आपको इसमें ये दो सारी चीजें देखने मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, तो ये तीन पार्ट है, इसमें हेड है बेसिकली, स्टॉक है, बेस है। What is this? This is cristae. It has head, stalk and base। अच्छा, हेड के अंदर क्या होता है, तो हेड के अंदर एंजाइम्स होता है, तो ये बात याद रखना। किसी ने पूछ लिया व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द हेड, तो वी कैन से हेड हैज एंजाइम्स फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये बात ध्यान में रखना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए
बेसिकली हेड के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, इन्हीं क्रिस्टे के ऊपर ना स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स भी होते हैं। और जब हम एटीपी सिंथेज हमने पढ़ा था तो हमने इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया हुआ है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट क्रिस्टे also has ATP सिंथेज एंजाइम, और ये ATP सिंथेज एंजाइम जो है बेसिकली वो ATP सिंथेसिस में काम आता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, we have studied that respiration is of basically two types, ये हमने स्कूल में भी पढ़ा है। ठीक है, जो सबसे पहला रेस्पिरेशन होता है उसे आप कहते हो एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो दूसरा टाइप होता है उसे आप कहते हो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसका जो है ना डिस्टिंग्विश कभी कभी आता है, तो आपको ये चीजें आनी जरूरी है कि एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में फर्क क्या है। तो सबसे पहला तो हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। तो जैसे आप एरोबिक रेस्पिरेशन बोलोगे तो इसे हम कह सकते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 क्या देगा, तो हम कहते हैं 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। और वहीं पे जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन का बात करोगे तो उसका रिएक्शन क्या हो जाता है, तो हम कहते हैं C6H12O6 टूटेगा, ये देता है 2C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP। अब ये दोनों का रिएक्शन हो गया। हमें क्या करना है कि हमें जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन पकड़ना है एरोबिक और एनारोबिक का। तो एरोबिक और एनारोबिक का आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना भी इजी होगा, क्योंकि जब आपके पास रिएक्शन है तो बहुत सारी चीजें आप अपने आप कह सकते हो। तो एक तरफ चलो हम लोग लिख देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब रिएक्शन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो आधा से ज्यादा पॉइंट जो है यू विल गेट इट फ्रॉम द रिएक्शन इटसेल्फ। सबसे पहला पार्ट आपको ये समझना है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है आप उसे कहोगे टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करोगे तब आप कहोगे टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहना ये एक लेम वर्ड हो जाता है, एक्चुअली वो ऑक्सीजन को यूज नहीं करता। जहां पे भी ऑक्सीजन कम होता है तब एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे मसल्स, ठीक है, हमारे मसल्स भी जब ऑक्सीजन कम मिलता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं, लैक्टिक एसिड बनता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली आप ये कह सकते हो टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोट्स। वहीं आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करोगे आप कह दोगे टेक्स प्लेस इन ऑल प्रोकैरियोट्स। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सब एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन अगर आप देखो तब आप एक चीज बता सकते हो कि एनर्जी रिलीज्ड इज 38 ATP। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी निकल रही है वो 38 ATP है। वहीं आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर आप बात करोगे तब आप कहोगे एनर्जी रिलीज्ड इज 2 ATP। आप एरोबिक रेस्पिरेशन को देखोगे तब आप कहोगे कि बाय प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वही एनारोबिक रेस्पिरेशन में
जो बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं तो हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट्स आर इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ज्यादा समय लेता है, तो वी कैन से टेक्स लॉन्ग टाइम एंड नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई टॉक्सिक कंपाउंड नहीं बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल, अगर आपके बॉडी में इथाइल अल्कोहल बनेगा तब सोचो आप अल्कोहलिक दिखोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहीं आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करोगे तब आप कहोगे टेक्स शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में हो जाता है, एंड टॉक्सिक क्योंकि इसमें इथाइल अल्कोहल बन रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर आप बात करते हो, आप कह दोगे टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, दो जगह पे होता है। वहीं आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करोगे तब आप कह दोगे टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है और कहीं नहीं हो सकता। वहीं आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करोगे तो इसके अंदर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है, 3 स्टेप्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। पॉइंट ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का 3 स्टेप क्या क्या है, तो हम उसको ऐसे बना देते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है वो है ग्लाइकोलाइसिस। फिर उसके बाद जो पढ़ेंगे वो है क्रेब्स साइकिल। फिर लास्ट में पढ़ेंगे ईटीएस। ईटीएस जो होता है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एनारोबिक रेस्पिरेशन का 3 स्टेप कौन सा है, तो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा जो स्टेप है उसे आप कहते हो डी कार्बोक्सिलेशन। जो तीसरा स्टेप है उसे आप नाम देते हो रिडक्शन। तो ये 3 स्टेप में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कंप्लीट होता है। तो ये 2 रेस्पिरेशन के अलावा और कोई रेस्पिरेशन नहीं है। ओवरऑल रिएक्शन देखने का कोशिश करते हैं कि लॉजिकली होता क्या है। ठीक है, तो हम इसे हेडिंग में डाल देते हैं ओवरऑल रिएक्शन। मतलब जब ग्लूकोज टूट के 38 एटीपी दे रहा है तो क्या क्या चीजें उसके अंदर चलती है, तो हम इसको ऐसे कंपेयर करते हैं। हम लिखते हैं ग्लूकोज जो 6 कार्बन का कंपाउंड है वो टूटेगा, कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में जो 3 कार्बन का है। पायरुविक एसिड आगे कन्वर्ट होगा NaDH2 FADH2 में, और फाइनली ये जो है सब के सब ATP में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो रिएक्शन है जहां पे ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड बन रहा है, इसे आप कहते हो ग्लाइकोलाइसिस। ये जो नीचे वाला रिएक्शन है जहां पायरुविक एसिड टूट के NaDH2 और FADH2 बन रहा है, तो इस रिएक्शन को आप एक नाम देते हो क्रेब्स साइकिल। NaDH2 और FADH2 जो अब ATP में टूटता है, तो जिस प्रोसेस से टूटता है वो है ETS। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है ग्लूकोज से लेकर के पायरुविक एसिड वाला काम, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और वहीं पर जब ये बाकी दो देखोगे क्रेब्स साइकिल और ETS, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो बेसिकली ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड। ये जो है ना ग्लाइकोलाइसिस यूनिवर्सल स्टेप है। जैसे ही आप इसे कह देते हो यूनिवर्सल स्टेप, मतलब ये हो गया कि चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है। तो मैं ये कह सकता हूं यूनिवर्सल स्टेप occurs in all cells। ऑल सेल्स का मतलब हो गया
कि चाहे ये प्रोकैरियोट हो और यूकैरियोट हो, ये सब में जो है मिलते हैं, यूनिवर्सल स्टेप है। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम जो क्या है, तो हम कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज EMP pathway. It is also known as what? EMP pathway. जैसे आप EMP pathway बोलते हो ना, तो इसका एक फुल फॉर्म है EMP। तो E का जो मतलब होता है उसे हम कहते हैं एम्बडेन। M का जो फुल फॉर्म है उसे आप कहते हो मेयरहॉफ। और जो P होता है बेसिकली वो होता है पार्नस। तो एमडेन, मेयरहॉफ और पार्नस, ये तीनों ने मिलकर ग्लाइकोलाइसिस दिया, यूनिवर्सल स्टेप। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में ये होता है, ये भी हमने पढ़ा। इस शब्द का मतलब क्या है? सो लेट्स ब्रेक द वर्ड टू गेट द मीनिंग। तो पहला वर्ड है ग्लाइको, दूसरा वर्ड है लाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। सो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस क्या है? इट्स अ ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर है कि जो ग्लाइकोलाइसिस होगा वो 2 फेज में कंप्लीट हो रहा है, 2 फेजेस। और वो कौन कौन सा 2 फेजेस है? पहला है प्रिपरेटरी फेज, पहले वाले को हम कह देते हैं प्रिपरेटरी फेज एंड क्लीवेज। क्लीवेज मतलब टूटना। और दूसरा जो फेज होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज, जिसको आप चाहो तो पे ऑफ फेज भी कह सकते हो। सो लॉजिकली यहां पर ये जो है, ये 2 इंपॉर्टेंट फेजेस यहाँ पे चल रहा है। अब जब आप ग्लाइकोलाइसिस की बात करोगे, देयर आर सर्टेन टर्म्स, अगर आपको क्लियर हो ना तो उसका एक अपना ही मजा है। सबसे पहला क्या होता है? तो पहला वर्ड जो होता है वो है फॉस्फोराइलेशन। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको फिर से, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फो का मतलब होता है फॉस्फेट, ये ध्यान में रखिएगा। राइलेशन, जो शब्द है राइलेशन, राइलेशन का मतलब होता है एडिशन। सो लॉजिकली अगर किसी ने पूछा फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, तो मैं कह दूंगा ADP प्लस IP जुड़ के बन गया ATP, मतलब ये फॉस्फोराइलेशन हो गया, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। अब यहाँ पर जो IP है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो हम उसे कहते हैं इट इज नथिंग बट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हम सबको समझना है। अब ये जो फॉस्फोराइलेशन है इसको हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? तो याद रखना, फॉस्फोराइलेशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कैटेगरी होता है उसे आप कहते हो फोटो फॉस्फोराइलेशन, पहला वर्ड। दूसरा जो टर्म आता है वो है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है कि सबस्ट्रेट के लेवल पे होगा। और जो तीसरा हमें पढ़ना है बेसिकली वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब ये 3 अलग अलग वर्ड है, लेकिन मायने जो है ना, जब आप इसको पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स आर सेम। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें जरा देखते हैं। जैसे आप कहते हो फोटो फॉस्फोराइलेशन, तो फोटो का मतलब हो जाता है लाइट, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा? फोटो फॉस्फोराइलेशन। मतलब मैं कह दूं ADP प्लस IP जो ATP बनाएगा
वो लाइट के प्रेजेंस में बनाता है, तो इसीलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। दूसरा क्या है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, मतलब ये होता है डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एनी सुटेबल सबस्ट्रेट। ये बात ध्यान में रखना, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन की अगर आप बात करोगे तो हम इसको ऐसे देख लेते हैं। अगर इसका डेफिनेशन देना होगा तब हम कहेंगे डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी, डायरेक्ट phosphorylation of ADP by a transfer of phosphate group, by transfer of phosphate from any suitable substrate। ये इंपॉर्टेंट चीज है, from any suitable substrate, मतलब कोई भी सबस्ट्रेट को आप जो है बेसिकली फॉस्फेट दे करके जोड़ लो, उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। ये साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। मतलब अगर आप इसकी बात करोगे कहाँ होगा, तो हम कहते हैं साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होता है। दूसरा ये कहाँ होता है, तो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। देखो जो क्रिस्टे होता है ना, क्रिस्टे में नहीं हो रहा है, ये उसके मैट्रिक्स में हो रहा है। तीसरा जो टर्म है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब ये कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी, ध्यान से समझना, इसमें एनर्जी लगेगा एटीपी के फॉर्म में, तो हम कहते हैं phosphorylation of ADP at the cost of energy, मतलब ATP लगेगा at the cost of energy released during oxidation of substrate, at the cost of energy released during, कब निकल रहा है, मतलब कब ऐसा है जो एनर्जी निकल रहा है उसको यूज करते हैं, तो हम कहते हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आपने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कह दिया, ठीक है, ये होता कब है, जैसे जब NADH प्लस H प्लस जो है टूटेगा तो जो ATP बनता है तब होता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया हुआ है एक NADH2 जो है 3 ATP के बराबर है। अच्छा, ये होता कहाँ है, तो हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ओनली इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो उसका क्रिस्टे होता है ना, क्रिस्टे के ऊपर जो F1 पार्टिकल्स हैं वो F1 पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं हमें समझनी पड़ेंगी। अब यहां पर जो है ये टर्म्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। द मोमेंट वी यूज दिस वर्ड ग्लाइकोलाइसिस, इसमें सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह है कि ग्लाइकोलाइसिस में वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ये टूट रहा है, बहुत ध्यान से समझना। इसमें होता यह है वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक्स टू गिव यू 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड। तो जैसे ही आप बोलते हो वन मॉलिक्यूल, तो एक ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का है और एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है। अगर 6 कार्बन का कंपाउंड हो गया, टूट गया तो ये बनेगा। इसको आप क्या कह सकते हो, इसे ही हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और सबसे मजेदार बात यह है ये किसके अंदर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। एक कॉमन स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं और वो स्टेटमेंट आप अगर बैठा लिए ना दिमाग में तो आपको आंसर लिखने में तकलीफ नहीं होगी। स्टेटमेंट ये है, हम कहते हैं डैश undergoes dash and forms dash in the presence of
एंजाइम डैश, ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, डैश अंडरगोज डैश एंड फॉर्म्स डैश इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डैश। अब इसी के साथ हमारा ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होता है। तो देखो, जब आप बोलोगे, मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ बेसिकली, और ये लाइन जो है मैं स्टेप्स के लिए लिखूंगा। यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, जैसे ये हम ये बना लेते हैं। तो ये लाइन के इस तरफ जो है मैं पूरा यहाँ पर जो है स्टेप्स के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखूंगा कि कौन कौन से स्टेप्स कैसे, एंड में फिर तुम्हें एक शॉर्टकट तरीके समझा दूंगा क्या चीजें हो रही है, कैसे हो रही है। तो स्टेप नंबर 1, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, सो आई पुट इट इन दिस वे। स्टेप नंबर 1 जो है उसे ऐसे कहते हैं, ग्लूकोज अंडरगोज, ठीक है, ग्लूकोज टूटेगा। तो स्टेप नंबर 1 में हम कहते हैं ग्लूकोज अंडरगोज फॉस्फोराइलेशन। जैसे आप फॉस्फोराइलेशन कहोगे मतलब ग्लूकोज में फॉस्फेट जुड़ेगा। तो ग्लूकोज अगर फॉस्फोराइलेशन कर लिया तो ये क्या बन जाता है, तो हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका मतलब ये हो गया कि ग्लूकोज के 6वें कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा। पॉइंट ये है कि ये फॉस्फेट आता कहां से है, तो हम कहते हैं जब एटीपी टूटा, एडीपी बना, तो एक फॉस्फेट निकला, वो फॉस्फेट चला गया ग्लूकोज को, और फाइनली ये बना। अच्छा, ये जो रिएक्शन हो रहा है, तो ये बेसिक चीजें हो गई कि ग्लूकोज जो है टूटेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज कितने कार्बन का है, तो हम ये कहते हैं कि ग्लूकोज जो है इट इज ऑफ 6 कार्बन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी कितने कार्बन का है, तो हम कहते हैं 6 कार्बन। अब ये इसके बाद नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जैसे बहुत सारी चीजें और भी आएंगी, फिलहाल हम सिंपल सिंपल एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो एक आइसोमराइजेशन करता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो इट विल अंडरगो आइसोमराइजेशन। स्टेप नंबर 2, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अंडरगोज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन किया तो क्या बना लिया, तो हमने कहा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये बात हम सबको पता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के दोनों आइसोमर हैं, और फाइनली आइसोमर है तो ये कार्बन नंबर भी 6 रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो थर्ड स्टेप करेगा, तो हम कहते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अंडरगोज थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में बेसिकली क्या करने वाला है, ध्यान से समझिएगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अंडरगोज, हम कहेंगे फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब इसको फॉस्फेट मिलेगा, तो बेसिकली इसके 6वें कार्बन पे ऑलरेडी फॉस्फेट है, तो हम कहते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अंडरगोज फॉस्फोराइलेशन। क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। मतलब क्या हो गया कि पहले कार्बन और 6वें कार्बन दोनों पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया। So fructose sugar के फर्स्ट कार्बन और 6 कार्बन पे what you are going to get, you are going to get phosphate। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो ये है कि ये फ्रक्टोज जो है टूटता है, और यही टर्निंग पॉइंट है। इसके ऊपर आपने जो भी पढ़ा वो सब प्रिपरेटरी फेज था, अब जो पढ़ रहे हो वो पे ऑफ फेज है। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना, तो फॉस्फेट आया कहां से, तो हम कहते हैं एटीपी जो है टूट के क्या बन गया, एडीपी, और जो फॉस्फेट निकला इसको गया। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट अंडरगोज फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसको आप कहते हो क्लीवेज। क्लीवेज किया तो टूटा, टूटा तो किस में टूटा, तो हम कहते हैं एक बना पीजीएल, या फिर इसको लिख लेते हैं डीएचएपी। एक बना डीएचएपी, जिसको आप ढाप भी कह सकते हो फिलहाल के लिए, और एक बनता है पीजीएल। डीएचएपी जो है ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और पीजीएल जो होता है वो है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। आप ये भी कह सकते हो, या आप कह लो इसे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। मतलब क्या हो गया कि जो फॉस्फेट ग्रुप है ना वो थर्ड कार्बन पर है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये देखो, ये 3 कार्बन का बना, ये 3 कार्बन का बना,
ये हमारा फोर्थ स्टेप। पांचवा स्टेप में क्या होता है, ये जो DHAP है ना, ये थोड़ा अनस्टेबल है। ध्यान देना क्या कह रहा हूं। DHAP जो है ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, इसके लिए हम DHAP को कन्वर्ट कर लेते हैं PGL में, क्योंकि PGL ज्यादा स्टेबल है। तो पांचवें स्टेप पे हम ये कह सकते हैं कि DHAP इज अनस्टेबल, सो इट अंडरगोज व्हाट, आइसोमराइजेशन। और एक तो PGL पहले से ही था, और ये जो DHAP है ये भी कन्वर्ट हो गया PGL में। तो लॉजिकली आपके पास अब PGL जो आ गया वो कितना हो गया, 2। तो हम यहां पर अब लिखेंगे 3PGL। 3 का मतलब क्या होता है मालूम है, कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो थर्ड कार्बन पर है, एज सिंपल एज इट। तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड हो गया। अब ये जो 3PGL आपको मिला हुआ है, ठीक है, ये कितने कार्बन का होगा, तो डेफिनेटली हमने पहले ही बता दिया 3 कार्बन का होगा। लेकिन मजेदार बात यह है, यहाँ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो देखो एक PGL पहले ही था, ये दूसरा भी आ गया, तो यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। तो इस तरीके के 2 मॉलिक्यूल्स बने। अब मैं आपको नीचे जाना है एरो बना के, मैं ऊपर की तरफ बढ़ूंगा, मतलब ये जो 3PGL है व्हाट इट विल अंडरगो। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि 3PGL जो है ऑक्सीडेशन करता है, या इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो स्टेप नंबर 6 में आप वर्ड यूज करोगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि सबस्ट्रेट में जो है फॉस्फेट जुड़ना है। तो 3PGL ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और फॉस्फोराइलेशन भी कर रहा है, और वो करने के बाद जो इन्हें मिलता है वो है 1,3-डाई-PGA। 1,3-डाई-PGA मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर जो कार्बन है वो है 3 कार्बन का, जो मॉलिक्यूल है वो 2 ही रहेगा, 2 मॉलिक्यूल, बिकॉज चीजें वही हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ऑक्सीडेशन कर रहा है और फॉस्फोराइलेशन भी कर रहा है। ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या, ये हाइड्रोजन लूज करेगा। कौन लूज करेगा, PGL। अगर PGL ने हाइड्रोजन दिया तो हाइड्रोजन लेने के लिए कौन है, तो हमेशा हाइड्रोजन कौन लेता है, NAD लेता है। मैं 2 NAD लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स 2 है। और ये हाइड्रोजन लेने के बाद क्या बन जाता है, तो हम कहते हैं ये बन जाता है 2NADH प्लस प्लस H प्लस। अगर आप ये नहीं कहना चाहते तो डायरेक्ट 2NADH2 कह दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है, क्योंकि हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला है। तो जो इनको फॉस्फेट ग्रुप मिलता है वो कहां से मिलता है, तो हम कहते हैं 2H3PO4 से मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड से। तो ये 3PGL ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किया, बन गया 1,3-डाई-PGA। 1,3-डाई-PGA जो है नेक्स्ट स्टेप करता है वो है डीफॉस्फोराइलेशन। अब डीफॉस्फोराइलेशन का मतलब ये हो गया कि वो एनर्जी को लूज आउट कर रहा है, फॉस्फेट लूज करेगा। अगर 1,3-डाई-PGA मतलब फर्स्ट कार्बन थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है ना, तो ये जो है लूज कर दिया एक फॉस्फेट। मतलब कौन से कार्बन का लूज किया, तो हम कह देंगे फर्स्ट कार्बन का। और फर्स्ट कार्बन का उसने लूज कर दिया तो ये बन गया 3PGA। ये मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो हम कहते हैं 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसने जो फॉस्फेट लूज किया, फॉस्फेट जाएगा कहाँ, कोई तो आना चाहिए ना फॉस्फेट लेने के लिए। तो ये जो फॉस्फेट है वो लेता है ADP, और 2 ADP ने फॉस्फेट लिया तो बन गया 2 ATP। मतलब यहाँ पे ATP खर्च हो रहा है पहले फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन में, और ये वाले 7th स्टेप में सिंथेसाइज हो रहा है। अच्छा, जो 3PGA बना ये स्टेप नंबर 8 करता है, जिसको आप आइसोमराइजेशन कहते हो। और आइसोमराइजेशन के वक्त ये 3PGA बन जाता है 2PGA। मतलब क्या हो गया, जो फॉस्फेट था वो थर्ड कार्बन से शिफ्ट होके कहां चला गया, सेकंड कार्बन पे, बस और कुछ नहीं है, दैट इज 2PGA। अच्छा, ये जो 2PGA है ये डिहाइड्रेशन करता है, स्टेप नंबर 9, इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन।
अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी निकलना। तो जब 2PGA डिहाइड्रेशन करेगा तो क्या बन जाएगा? PEPA। PEPA मतलब क्या होता है? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। 3 कार्बन का हो गया। ये कितना मॉलिक्यूल है? तो हम कहते हैं 2 मॉलिक्यूल। अब डिहाइड्रेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर। वाटर यहां से निकलेगा 2H2O। 2 क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल्स दो है। ये PEPA जो है लास्ट स्टेप करता है। लास्ट स्टेप का मतलब हो गया कि स्टेप नंबर 10। तो PEPA will undergo step number 10, that is called as dephosphorylation। dephosphorylation करेगा और फाइनली क्या बन जाता है? PA। PA का मतलब होता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है बेसिकली कितने कार्बन का है? तो हमने कह देना है 3 कार्बन का है। कितना मॉलिक्यूल है? तो हम कह देंगे 2 मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से 10 स्टेप लगते हैं, टोटल 10 स्टेप लगते हैं, तब जाकर के रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब चलो एक एक स्टेप को फुल कंप्लीट करेंगे। फुल कंप्लीट मतलब थिंग्स विल बी एडेड। हम इस पे फोकस करने वाले हैं। किस पे? ये जो हमारा मेन रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था, अब इसी को ध्यान देते हुए 10 का 10 स्टेप ले लेंगे। पहला स्टेप, ग्लूकोज डैश में भरेंगे, अंडरगोस फॉस्फोराइलेशन एंड फॉर्म्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब यहां पर जो एंजाइम लग रहा है इस प्रोसेस में, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। ग्लूकोज अंडरगोस फॉस्फोराइलेशन एंड फॉर्म्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इट विल अंडरगो आइसोमराइजेशन एंड इट फॉर्म्स व्हाट? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो बना वो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज। देखिए, आप आइसोमरेज भी कह सकते हो या आप चाहो तो फॉस्फोफ्रुक्टो आइसोमरेज बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आइसोमरेज है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अंडरगोस थर्ड स्टेप फॉस्फोराइलेशन। क्या बना? फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो यहां पर भी जो एंजाइम लगेगा उसका नाम है फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज और बन गया फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फिर हम बोलेंगे फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट क्या किया? स्टेप नंबर 4, क्लीवेज एंड फॉर्म्स हुआ DHAP एंड PGL इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्डोलेज। अल्डोलेज के प्रेजेंस में टूट गया। फिर DHAP जो है थोड़ा कम स्टेबल है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और PGL थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। तो हम क्या करते हैं? DHAP को कन्वर्ट कर लेते हैं PGL में। तो हम कहते हैं DHAP अंडरगो स्टेप नंबर 5 आइसोमराइजेशन और PGL बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज। जो 3PGL बना मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, थर्ड कार्बन में फॉस्फेट है, 2 मॉलिक्यूल बन गया। अब ये जो 3PGL है, इट विल अंडरगो नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कर रहा है तो क्या बन गया? 1,3-DiPGA। यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? देखिए, PGAL का बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि एंजाइम का मामला है। PGAL का हाइड्रोजन निकल रहा है, टू बी वेरी मच स्पेसिफिक, PGAL का क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है। तो अगर PGAL का हाइड्रोजन निकल रहा है तो यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा क्या होगा जानते हो? वो एंजाइम है PGAL डिहाइड्रोजनेज। वेरी सिंपल, क्योंकि PGL का हाइड्रोजन निकल रहा है। तो एंजाइम इज PGL डिहाइड्रोजनेज। तो हम कहेंगे 3PGL undergoes oxidative phosphorylation and forms 1,3-DiPGA in the presence of enzyme PGL dehydrogenase। अब 1,3-DiPGA क्या कर रहा है? डिफॉस्फोराइलेशन कर रहा है। ठीक है, 1,3-DiPGA undergoes dephosphorylation और 3PGA बना लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो हम कहते हैं PGA काइनेज। 3PGA undergoes isomerization और 2PGA बन गया, तो इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम PGA म्यूटेज। 2PGA ने क्या किया? इट अंडरगोस डिहाइड्रेशन, फॉर्म्स PEPA इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो इनोलेज की मदद से होता है। PEPA जो है इट विल अंडरगो डिफॉस्फोराइलेशन। डिफॉस्फोराइलेशन अगर कर रहा है तो इसका मतलब हो गया इसका फॉस्फेट निकल रहा है। तो जब इसका फॉस्फेट निकल रहा है किसको गया? तो हम कहते हैं
2 ADP ने फॉस्फेट लिया और क्या बन गया 2 ATP, और फाइनली जो क्या बन के रेडी हो गया पायरुविक एसिड। तो PE अंडरगोज डीफॉस्फोराइलेशन फॉर्मिंग PA इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम होगा PA काइनेज। PA काइनेज मतलब आप कह दो पायरुविक एसिड काइनेज, या आप कह सकते हो पायरुवेट काइनेज। अब इस पूरे सीन में ना कहीं कहीं जो है कुछ आयंस रिक्वायर्ड है, वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टेप नंबर 1 पे वी नीड Mg2+, स्टेप नंबर 3 पे वी नीड Mg2+, यानी यहां पर जो है आपको Mg2+ की जरूरत है। जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पर, जब ऑक्सीडेटिव डिफॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो यहाँ पर जो हमें लगेगा वो है Zn2+, जिंक का आयन। फिर जहां पे फॉस्फेट का लेन देन हो रहा है यानी यहाँ पर, फिर वहां पे आपको लगेगा Mg2+। फिर लास्ट में जब आप दिखा रहे हो स्टेप नंबर 9 और 10 में आपको लगेगा Mg2+, और यहाँ पर भी लगेगा Mg2+। तो ये जो है पूरा का पूरा ओवरऑल स्टेप है। अब इसमें ना इसका फुल फॉर्म देखना है और सारी चीजें देखनी है हमें, कर लेते हैं। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, कुछ फुल फॉर्म्स जो हमने वहां पर देखे थे, अब उसके फुल फॉर्म्स को भी तो समझना जरूरी है ना। तो पहला तो था PGAL का। देखो PGL का दो तरीके का फुल फॉर्म आप लिख सकते हो। एक आप कह सकते हो फॉस्फोग्लिसर अल्डिहाइड, पहला हो गया। या आप इसे चाहो तो एक और नाम दे सकते हो, आप इसे कह सकते हो ग्लिसर अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये सिंपली है एक IUPAC नेम है, एक जनरल नेम के हिसाब से चल जा रहा है। DHAP का जो फुल फॉर्म है वो है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये हो गया DHAP का। इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो था PGA। तो PGA को आप कहोगे फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, या इसे दूसरा भी नाम दिया जाता है जिसे आप कहते हो फॉस्फोग्लिसरेट। ग्लिसरिक एसिड कह लो, ग्लिसरेट कह लो, इट्स वन एंड द सेम स्टफ। उसके बाद जो हमने पढ़ना है वो है PEPA। PEPA का फुल फॉर्म होता है फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड। देखो ये इनॉल है, फिनॉल नहीं है, प्लीज ध्यान समझना। आप इसे चाहो तो एक और नाम दे सकते हो जिसे आप कहते हो फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। तो आपके पास दो अलग नाम आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो अपने पास टर्म आता है बेसिकली, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है, वो क्या है PA। तो PA का जो फुल फॉर्म है वो है पायरुविक एसिड। अगर आप पायरुविक एसिड नहीं कहना चाहते तब आप कह दो पायरुवेट। नेक्स्ट जो आता है वो है NADH। NADH का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ये बन गया आपका NADH। एक और चीज रिएक्शन में यूज की गई है वो है H3PO4, जिसको आप जनरली कहते हो फॉस्फोरिक एसिड। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स हो गए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है ना वो है एनर्जी अकाउंट। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बिना एनर्जी अकाउंट के तो आप, क्योंकि आप एंड में जब पूरा तरह से कहोगे ग्लूकोज टूट गया है तब आपको 38 ATP दिखाना है, आपको हिसाब देना पड़ेगा भाई कहाँ से 38 ATP निकला है। तो सबसे पहली चीज जब आप एनर्जी अकाउंट पे जाओगे तो सबसे पहला तो ये समझो कि ATP यूज्ड कितना है। तो अगर आप रिएक्शन की तरफ आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ATP यूज हो रहा है, दूसरा ATP यहाँ पे यूज हो रहा है। सो यू हैव 2 ATP यूज, ये पहला ATP है दूसरा ATP। तो हम ये कह सकते हैं ATP यूज्ड जो है वो है 2 ATP।
अब कहाँ कहाँ यूज हो रहा है 2 एटीपी, वो भी जरा समझ लेते हैं। तो पहला एटीपी कब यूज हो रहा है, जब ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तब एक एटीपी यूज हो रहा है, तो 1 एटीपी वहां पे। दूसरा जो एटीपी है वो कब हो रहा है, तो हम कहते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, तब जाकर के क्या यूज हो रहा है, एक एटीपी। तो लॉजिकली इस तरीके से 2 एटीपी ये 2 स्टेप में यूज हो रहा है। अच्छा, एटीपी यूज इतना हो गया। दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि एटीपी फॉर्म्ड कितने हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी फॉर्म भी हो रहा है। तो एटीपी फॉर्म्ड जो है वो एक्चुअली 4 एटीपी होता है। अब आप सोचोगे कहाँ कहाँ, तो ये देखो 1,3 डाई पीजीएस जब 3 पीजीए बन रहा है 2 एटीपी बन रहा है, पेपा से पा बन रहा है तो 2 एटीपी बन रहा है। तो लॉजिकली मैं ये कह सकता हूं कि जब 1,3 डाई पीजीए तो 3 पीजीए हो रहा है, तब कितना यूज हो रहा है, तो हम कहते हैं 2 एटीपी बन गया। फिर जब पेपा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड फाइनली बन के रेडी हो रहा है तो 2 एटीपी। इस तरीके से 4 एटीपी का यूज हो रहा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, वो है NADH2 का, कि NADH2 फॉर्म्ड कितना है, तो हम कहते हैं 2 NADH2। अब यहां पर जो है आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, 2 NADH2 कहां बन रहा है, तो हम कहते हैं 3 PGL से जब 1,3 डाईपीजी हो रहा है, तो इसको हम ये कहेंगे जब 3 PGAL से 1,3 डाई पीजीए बन रहा है तब 2 NADH प्लस प्लस H प्लस सिंथेसाइज हो रहा है। तो इस तरीके से बन रहा है। अच्छा, मजेदार बात आपको ये समझनी है कि ये जो NADH2 की मैं बात कर रहा हूं ना, ये NADH2 कोई करेंसी नहीं है। जो NADH2 है ना, इट इज एक्टिंग लाइक अ चेक। जैसे कोई किसी ने आपने काम किया और आपको चेक दे दिया, तो वो चेक जो है डायरेक्टली तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, कैश नहीं हो सकता। तो आप उस चेक को सबसे पहले क्या जरूरी है, बैंक में डालना। जब आप उस चेक को बैंक में डालते हो तो बैंक में वो 50 जगह पे घूमता है, कभी एक काउंटर पे थप्पा, दूसरे काउंटर पे थप्पा, ऐसे सब जगह थप्पा थप्पा लगते हुए फाइनली वो कैश होता है, तो आपको एटीपी मिलता है। तो हम जो बैंक की बात कर रहे हैं, ये जो है ना, ये जो आप बात कर रहे हो इसकी, ये जो बैंक है जहाँ पे NADH2 जाएगा, उस बैंक को हम ETS कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कैश तो आप यूज कर लोगे, और सबसे बड़ी बात 2 NADH2 बन रहा है, 2 NADH2 बन रहा है तो ATP 6 बन रहा है। मतलब इस कहानी से आप ये क्या समझे कि 1 NADH2 एक नाड़ू की कीमत जो है 3 ATP के बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इस पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप देखोगे तब आपको एक्चुअल में आंसर समझ में आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड द कंप्लीट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो देखो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एटीपी यूज्ड था 2, ठीक है, एटीपी फॉर्म्ड था 4, तो 4 में से 2 एटीपी यूज कर लिया तो बचा कितना, सिर्फ 2 बचा। तो मैं ये कह लूंगा एटीपी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 2 एटीपी, पहली बात। ठीक है, अब NADH2 की तरफ से चलोगे तो NADH2 टू ATP कन्वर्जन अगर हुआ तो कितना NADH2 था, 2, तो 2 का कितना बन गया, तो हम कहते हैं 6 ATP। तो यहाँ पे ATP फॉर्म्ड 2 ATP 6 ATP, तो आपको जो टोटल ATP मिलेगा ना, टोटल ATP इज इक्वल टू 8 ATP। मतलब 38 ATP में से मैं ये कह सकता हूं कि 8 ATP कहां से निकल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस निकल रहा है। तो भी 30 ATP अभी बचा हुआ है, तो भी 30 ATP अभी पेंडिंग है, जो हम सबको समझना है। अच्छा, यहाँ पे ना दो एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बार बार जो घुमाया जाएगा, नेट गेन कितना है और टोटल कितना। देखो टोटल तो मैंने आपको बता दिया 8 ATP,
अगर कभी क्या होता है, ये पूछा जाता है कि नेट गेन क्या है। अच्छा, नेट गेन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको मान लो 1000 रुपया पेमेंट किया, तो 900 रुपया मैंने आपको चेक से दिया, 100 रुपया कैश दिया, तो उस वक्त नेट अमाउंट आपके पास कितना है जो आप खर्च कर सकते हो, तो आप कहोगे 100 रुपए। तो वही 100 रुपया जो है बनता है नेट गेन। जो 900 है वो तो चेक है ना, जब बैंक में जमा करोगे तब कैश होगा, तब पैसे मिलेंगे, तब की बात तब। तो यहाँ पर नेट गेन की अगर हमेशा बात की जाएगी, याद रखना 2 एटीपी, मतलब 4 में से 2 यूज कर ले रहा है, तो 2 बच रहा है, 2 को कहीं पे भी खर्च कर सकता है, लेकिन ओवरऑल उसको कितना मिला है, तो हम कहते हैं 8 एटीपी। तो इस तरीके से जो है बेसिकली सारे ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स आएंगे। वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसको आप लिंक्ड रिएक्शन का नाम देते हो। नाउ हियर वी कॉल इट एज लिंक्ड रिएक्शन। अब लिंक्ड रिएक्शन का कोई दूसरा भी नाम है, सो डेफिनेटली यस, लिंक्ड रिएक्शन is also called as acetylation of pyruvic acid। तो यहाँ पे 2 नाम आ जाता है, आप उसे कह लीजिए लिंक्ड रिएक्शन, या आप उसे कह सकते हो acetylation of pyruvic acid। You can call it as linked reaction or even you can call it as acetylation of pyruvic acid, क्योंकि हमें ये पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का आपको दिया, बट प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि जो पायरुविक एसिड है उसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है, इट कैनॉट एंटर डायरेक्टली इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसी के लिए ये जो पायरुविक एसिड बना है इसको हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में जा पाए। तो इस पूरे लिंक रिएक्शन में कहानी कैसे चलती है, देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पायरुविक एसिड, और ये जो पायरुविक एसिड बना था इसको पायरुवेट भी कहते हैं। तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, कितना मॉलिक्यूल बना था, तो हम कहते हैं 2 मॉलिक्यूल। ये जो पायरुविक एसिड है इट विल अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे मैंने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहा, इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये कि ये पायरुविक एसिड हाइड्रोजन लूज करेगा। तो हाइड्रोजन कौन ले लेता है, तो हाइड्रोजन ले लेता है 2NAD, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है लेकर के 2NADH2 में। दिस इज ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेशन हो गया। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब 2 molecules involved। So this is nothing but the first step, it is oxidative decarboxylation। तो हम ये कहेंगे कि पायरुविक एसिड undergoes oxidative decarboxylation and it forms acetyl। ये जो बन गया ये बना एसिटाइल। अब सवाल ये उठता है 3 कार्बन का था, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो ये 2 कार्बन का बनेगा। कितना बनेगा, तो हम कहते हैं 2 मॉलिक्यूल्स। याद रखना हर जगह पे हम 2 मॉलिक्यूल्स का यूज कर रहे हैं। अब ये जो 2 एसिटाइल है ना, ये आगे टूटता है बेसिकली, 2 एसिटाइल ब्रेक्स अप। अब जो है आगे जो है किससे कंबाइन करता है, तो इट कंबाइंस विद कोएंजाइम ए, और जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से कंबाइन कर जाता है तो ये बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है 2 कार्बन का है, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम कहते हैं 2 मॉलिक्यूल्स आर देयर। इस प्रोसेस में यहाँ पर एक एंजाइम लगेगा। पायरुविक एसिड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन फॉर्मिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो इसको शॉर्ट में अगर मैं कहना चाहूं तो इस एंजाइम को मैं पीडीसी भी कह सकता हूं। पीडीसी मतलब क्या हो गया, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सो दिस बिकम्स द एंजाइम, और फाइनली वो पायरुविक एसिड जो है रेडी होता है, और अब वो जा सकता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बता दूं कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है is the acetyl coenzyme A is the connecting link। ये बात ध्यान में रखना, एसिटाइल कोएंजाइम A क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, तो हम कहते हैं बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल।
ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को कोई जोड़ता है, कोई कनेक्टिंग लिंक है, तो बेसिकली क्या है, तो हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है 2 मॉलिक्यूल्स का, अब वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा टू फॉलो क्रेब्स साइकिल। तो हम कहते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A enters, 2 molecules of acetyl coenzyme A enters mitochondria for Krebs cycle। तो अब मैं जो आपको Krebs cycle बताऊंगा बेसिकली वो एक मॉलिक्यूल के लिए बताऊंगा, लेकिन 2 मॉलिक्यूल घुस रहे हैं तो प्रोसेस 2 बार चलेगा। तो चलो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस कर लेते हैं, दैट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज Krebs cycle। अब इसके एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। एक नाम तो आपको क्रेब्स साइकिल दिख रहा है, उसके दूसरे दूसरे नाम क्या हैं जरा उसे हम समझ लेते हैं। तो जैसे ही आप बात करोगे क्रेब्स साइकिल की, तो इसका जो सबसे पहला नाम है, जो फर्स्ट नेम है बेसिकली, इसे हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, पहली बात। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम जो है बेसिकली वो क्या है, टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और तीसरा नाम तो आप जान ही रहे हो, तो दैट इज क्रेब्स साइकिल। तो ये जो है इसका इतना सारा नाम क्यों है? तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है, कि सिट्रिक एसिड साइकिल हम इसलिए कह रहे हैं इसे क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ साइकिल इज सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड कह लो, सिट्रेट कह लो, एक ही बात होती है। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ द साइकिल इज सिट्रिक एसिड, इसी के लिए इसको जो है हम क्या कहते हैं, बेसिकली सिट्रेट एसिड साइकिल। अच्छा, टीसीए साइकिल का फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 बार जो है बेसिकली कार्बोक्सिलेशन होगा। और क्रेब्स साइकिल हम क्यों कह रहे हैं? तो क्रेब्स साइकिल जो है बेसिकली इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दैट इज हैंसन क्रेब। और हैंसन क्रेब ने बेसिकली ये पूरा का पूरा जो क्रेब साइकिल है, इट डिड एक्सपेरिमेंट इन पिजन, कबूतर में एक्सपेरिमेंट करके सारी चीजें इसने बताई। अब यहाँ पर जो है मैं आपको क्रेब साइकिल का बेसिक आइडिया दूंगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको एक सेंटेंस बता देता हूँ, वो सेंटेंस आपको याद रखना जरूरी है। या हम लोग एक काम करते हैं, पहले क्रेब साइकिल करते हैं, फिर आपको मैं एंड में आई विल शो यू द शॉर्टकट हाउ टू रिमेम्बर दिस। सो जब भी क्रेब साइकिल की अगर आप बात करोगे तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है, ठीक है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट क्रेब साइकिल, तो एक सबसे खास बात यह है कि इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्रेब्स साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। ऑल द एंजाइम्स, ठीक है, ऑल द एंजाइम्स required for Krebs cycle, all the enzyme required for Krebs cycle is present in matrix। तो मैट्रिक्स में खाली एक ही एक एंजाइम है जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है, उसको छोड़कर जितने भी एंजाइम्स हैं सब के सब कहाँ प्रेजेंट हैं? बेसिकली सब के सब प्रेजेंट हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अच्छा, ये जब मैं आपको क्रेब्स साइकिल बताऊंगा ना, तो उसके लिए एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। स्टेटमेंट ये है कि डैश अंडरगोज डैश एंड फॉर्म्स डैश in the presence of enzyme dash। ये क्रेब्स साइकिल का बेसिक रूल है, डैश अंडरगोज डैश एंड फॉर्म्स डैश इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डैश। और दूसरी बात, साइकिल विल रन 2 टाइम्स। रीजन सिर्फ इतना सही है
क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल जो बना है वो 2 मॉलिक्यूल है। तो ये बेसिक है, डैश अंडरगोज डैश एंड फॉर्म्स डैश इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डैश। अब इन्हीं पैरामीटर्स के दम पे हम क्या करने वाले हैं, हम क्रेब्स साइकिल को समझेंगे और ड्रॉ करेंगे। तो जो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है, बेसिकली क्रेब्स साइकिल जो स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा OAA से। पहला पॉइंट, इट स्टार्ट्स विथ OAA। OAA जो है ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। दिस OAA इज नथिंग बट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो ये OAA जो है बेसिकली किससे कंबाइन करेगा, तो हम कहते हैं ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से कंबाइन करेगा। तो याद रखने वाली बात ये है, चलो यहाँ पे हमने लिख दिया ग्लूकोज जो 6 कार्बन का है बेसिकली, और ग्लूकोज जो है क्या बन गया था, तो हमने कहा था पायरुविक एसिड बन गया था जो 3 कार्बन का था। और ये पायरुविक एसिड क्या बन गया था, तो हमने कहा था एसिटाइल कोएंजाइम ए जो 2 कार्बन का था। और यही एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या कर रहा है, बेसिकली साइकिल के अंदर एंटर कर रहा है। तो 4 कार्बन का OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम है, तो टोटल 6 कार्बन हो गया। तो यहाँ पर जो बनता है वो है सिट्रिक एसिड, जिसको आप सिट्रेट भी कह सकते हो, 6 कार्बन का बनेगा। अब देखो यहाँ पर जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में से सिर्फ एसिटाइल अंदर आता है, ये कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं आता। मतलब मैं ये कह सकता हूं ये जो कोएंजाइम ए है बेसिकली इट गोज बैक इनटू द साइटोप्लाज्म, ये फिर से निकल जाता है और चला जाता है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे, और कंडेंसेशन कहा तो बेसिकली यहाँ पे वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो देखो ये हमारा बन गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है, तो वी कैन कॉल इट एज कंडेंसेशन। तो आप कहोगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अंडरगोस कंडेंसेशन, मतलब वो कंबाइन करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए से, कोएंजाइम में वापस चला जाता है, सिर्फ एसिटाइल अंदर आता है, और क्या बनता है, सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड बन रहा है, तो यहाँ पे जो एंजाइम लिखोगे वो होगा सिट्रेट सिंथेटेज। सिट्रेट सिंथेटेज इज द एंजाइम फॉर स्टेप 1। तो अब देखो क्या बोलोगे, डैश अंडरगोस डैश एंड फॉर्म्स डैश इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डैश। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड अंडरगोस कंडेंसेशन and forms citric acid in the presence of enzyme citrate synthetase। जो citric acid है ये अब स्टेप नंबर 2 करेगा। स्टेप नंबर 2 का मतलब it will undergo dehydration, ये वाटर को लूज कर देता है। तो यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 2 आ गया। स्टेप नंबर 2 इज नथिंग बट डिहाइड्रेशन। तो आप कहोगे कि सिट्रिक एसिड अंडरगोज डिहाइड्रेशन and it forms aconitic acid, और जो aconitic acid बन रहा है it is in the presence of enzyme called aconitase। तो यहाँ पर जो है आप ये बोलोगे कि citric acid undergoes dehydration forms aconitic acid, और जो ये aconitic acid है ये भी 6 कार्बन का ही होगा, ठीक है, in the presence of enzyme aconitase। अच्छा, एकोनाइटिक एसिड क्या करता है, तो हम कहते हैं कि एकोनाइटिक एसिड अंडरगोज रीहाइड्रेशन, मतलब उसको वापस पानी फिर से मिलता है। तो एकोनाइटिक एसिड अंडरगोज रीहाइड्रेशन, दैट इज स्टेप नंबर 3। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जो एकोनाइटिक एसिड है इट विल अंडरगो रीहाइड्रेशन, पानी से कंबाइन करेगा, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म आइसोसिट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम again aconitase। So logically this aconitic acid undergoes rehydration और ये बन गया आइसोसिट्रिक एसिड, ये बन गया आइसोसिट्रिक एसिड, ये भी 6 कार्बन का है। और ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है नाउ इट विल अंडरगो द नेक्स्ट स्टेप। तो हम कहते हैं कि आइसोसिट्रिक एसिड विल अंडरगो स्टेप नंबर 4, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ये बात ध्यान रखना, आइसोसिट्रिक एसिड अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बनाएगा, सो इट फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। आप इसे ऑक्सैलोसक्सिनेट भी कह सकते हो, ये बात ध्यान में रखना।
तो हम कहते हैं आइसोसिट्रिक एसिड अंडरगोस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब अभी हाइड्रोजन लूज कर देगा। तो हाइड्रोजन जो लूज कर रहा है ना, आप देखो, आप इसको मैट्रिक्स में दिखाओगे अंदर की तरफ, क्योंकि ये बन रहा है। जो भी बाहर जा रहा है बाहर दिखाओ, लेकिन जो अंदर बन रहा है उसे आप इस तरीके से दिखाओगे। तो NAD क्या बन जाता है, NADH2। तो आइसोसिट्रिक एसिड अंडरगोज ऑक्सीडेशन and forms oxalosuccinic acid in the presence of enzyme। तो एंजाइम बहुत सिंपल सा है, वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। क्योंकि हाइड्रोजन किसका निकल रहा है, आइसोसिट्रिक एसिड का निकल रहा है, इसलिए आप आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस बोलोगे। अच्छा, oxalosuccinic acid now will undergo the next step, that is called as decarboxylation। तो जो oxalosuccinic acid बना हुआ है, it will undergo the next step, that is called as decarboxylation। और जैसे आपने decarboxylation कहा basically, so it means that it is going to lose out carbon dioxide। तो oxalosuccinic acid क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लूज करेगा। तो हम कहते हैं oxalosuccinic acid undergoes decarboxylation। और decarboxylation करके बेसिकली क्या बनाएगा, तो हम कहते हैं decarboxylation करके इट विल फॉर्म अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। याद रखना, इट विल फॉर्म अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो आप इसे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड भी कह लो या अल्फा कीटोग्लूटारेट भी कह दो। देखो 6 कार्बन का तो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड था ही, अब उसमें से जो है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो ये कितने कार्बन का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 कार्बन का। मतलब ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो है डीकार्बोक्सिलेशन करके 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाता है। अब यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा, द एंजाइम इन्वॉल्व विल बी, किसका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड का। तो आप कहोगे ऑक्सैलोसक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। सो दिस बिकम्स योर स्टेप नंबर 5। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का क्या होगा, तो हम कहते हैं कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब ये ऑक्सीडेशन भी करेगा और डीकार्बोक्सिलेशन भी करेगा। सो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये आपका बन जाता है स्टेप नंबर 6। व्हाट अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज अंडरगोइंग, तो हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो एक सेकंड हो जाइए, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये हमारा स्टेप नंबर 6 है। ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन लूज करेगा। हाइड्रोजन लूज किया तो NAD के पास गया, देखो एरो मेरा किधर है, NAD से हाइड्रोजन मिला तो NADH2 बना, तो NADH2 की तरफ वो एरो है। एंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो। तो आप यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की बात करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गया। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, सो इट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का हाइड्रोजन निकल रहा है, इसीलिए एंजाइम हो गया अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस है। तो हमने कह दिया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, इट इज ऑफ 4 कार्बन। और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो बन रहा है, इट इज टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बेसिकली विल नाउ अंडरगो स्टेप नंबर 7। तो स्टेप 7 जो है बेसिकली इट सेज इट इज अंडरगोइंग फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन बाद में होगा, देयर विल बी फॉस्फोराइलेशन। और जब फॉस्फोराइलेशन होगा मतलब इसमें फॉस्फेट मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, it is undergoing phosphorylation. After undergoing phosphorylation, it is going to form succinic acid। मतलब सक्सिनिक एसिड यहाँ पर आता है, और ये सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का ही रहेगा। फॉस्फोराइलेशन मतलब हो गया कि फॉस्फेट ग्रुप आना चाहिए, तो यहाँ पर जो फॉस्फेट प्रोवाइड कर रहा है,
बेसिकली टू जीटीपी होगा। तो यहाँ पे जीटीपी है, दैट इज गुआनोसाइन डाइफॉस्फेट, फॉस्फोराइलेशन हुआ तो ये बन गया जीटीपी, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का कोएंजाइम ए है ना, ये कोएंजाइम में वापस निकल जाता है। सो वी कैन से दैट दिस कोएंजाइम ए गोज बैक हियर अगेन, ताकि ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू हो सके। नाउ दिस सक्सिनिक एसिड, अभी जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, इट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था काइनेज नाम का एंजाइम हमेशा इन्वॉल्व होता है फॉस्फोराइलेशन। So here the enzyme involved is thiokinase. Succinic acid now will undergo the next step, that is called as oxidation. So succinic acid will undergo step number 8. तो जो step number 8 है, basically it is called as oxidation. तो हम कहते हैं succinic acid undergoes oxidation, क्या बन जाता है? So it is going to form fumaric acid. This is very important. It is going to form fumaric acid. तो ये भी 4 कार्बन का है। अब ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन मतलब है हाइड्रोजन लूज करेगा। तो जो हाइड्रोजन लूज करेगा बेसिकली कौन लेता है? तो हम कहते हैं FAD। FAD हाइड्रोजन लेगा तो बन जाता है FADH2। अब यहाँ पर देखो फिर से, अब ये जो है इट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। जिस एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, क्योंकि सक्सिनिक एसिड का हाइड्रोजन निकल रहा है। सो एंजाइम इन्वॉल्वड इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 8। जो फ्यूमेरिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड विल अंडरगो द 9th स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। तो फ्यूमेरिक एसिड जो है हाइड्रेशन करेगा, पानी आएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो हम कहते हैं मैलिक एसिड। जो मैलिक एसिड है वो भी कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। सो समवेयर और द अदर यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर देयर इज एंट्री ऑफ वाटर। तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली दैट फ्यूमेरिक एसिड विल अंडरगो हाइड्रेशन, दैट इज योर स्टेप नंबर 9। तो जब स्टेप नंबर 9 आएगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अभी फिलहाल थोड़ा सा ऐसा हो रहा है बट ठीक है, ये हाइड्रेशन करेगा। स्टेप नंबर 9, फ्यूमेरिक एसिड अंडरगोस हाइड्रेशन, फॉर्म क्या करता है? मैलिक एसिड। तो जो मैलिक एसिड बन रहा है इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज। फ्यूमरेज नाम का एंजाइम है जो इसे बनाता है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि जो मैलिक एसिड है नाउ इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, और फिर से क्या बन जाता है? OA, मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर से बनाता है। ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन कर रहा है मतलब हाइड्रोजन लूज करेगा। तो हाइड्रोजन जो लूज किया वो कौन लेगा? NAD। NAD ने हाइड्रोजन लिया तो क्या बन गया? NADH2। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 10 ये कहता है कि मैलिक एसिड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड इट विल फॉर्म अगेन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब कौन सा एंजाइम है? तो मैलिक एसिड का निकल रहा है, तो आप एंजाइम कह दोगे मैलेट डिहाइड्रोजनेस। सो दिस मैलेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अब यहाँ पर साइकिल और इसको हम ऐसे एक लाइन से सेपरेट कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको भी चीजें क्लियर चलेंगी कि क्या हो रही है। तो देखो ये जो है ये लाइन सेपरेट कर रहा है इसे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो अब यहाँ पे मैं एक एक फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपके लिए इजी पड़ जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है बेसिकली वो है ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA undergoes condensation and forms citric acid in the presence of enzyme citrate synthetase. Step number 2, citric acid undergoes dehydration and forms aconitic acid in the presence of enzyme aconitase. Aconitic acid undergoes rehydration and forms isocitric acid in the presence of enzyme aconitase. Isocitric acid undergoes oxidation and forms oxalosuccinic acid in the presence of enzyme isocitrate dehydrogenase. Oxalosuccinic acid undergoes decarboxylation and forms alpha ketogluteric acid in the presence of enzyme
oxalosuccinate decarboxylase. Alpha ketoglutaric acid undergoes oxidative decarboxylation in the presence of enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase. Now the succinyl coenzyme A undergoes phosphorylation and forms succinic acid in the presence of enzyme thiokinase. Succinic acid will undergo oxidation. It forms fumaric acid in the presence of enzyme succinate dehydrogenase. Fumaric acid will undergo hydration and forms malic acid in the presence of enzyme fumarase. And the last step is malic acid will undergo oxidation and forms oxaloacetic acid in the presence of enzyme malate dehydrogenase. This is how you can complete your entire Krebs cycle. Now let's see the full forms first जो हमने यूज किया है. तो पहला है OA, that stands for oxaloacetic acid. आप इसे oxaloacetic acid भी कह सकते हो या आप इसे oxaloacetate भी कह सकते हो, that is OA. फिर जो फुल फॉर्म है वो है NADH2 का, इसे भी यूज किया गया है. तो NADH2 का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ये बन गया NADH2. फिर ये जो को ए है इसको हम कहते हैं कोएंजाइम ए, दैट विल बी यूज्ड. फिर हमने पढ़ा जीटीपी. जीटीपी जो होता है इट इज नथिंग बट गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. जीटीपी जो है वो क्या है, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. देन वी हैव FADH2. FADH2 जो होता है बेसिकली ये क्या है, फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन. तो इससे आप जो है FADH2 का नाम देते हैं. तो ये बेसिक फुल फॉर्म्स है जो हम सबको आना जरूरी है. अब पॉइंट ये आता है बेसिकली, पहले इसका हम एनर्जी अकाउंट कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा इसको लर्न कैसे करना है, इसका शॉर्टकट. तो सबसे पहला एनर्जी अकाउंट कि कितना NADH2 बन रहा है, कितना वाटर आ रहा है, कितनी सारी चीजें आ रही है, वो हमें ध्यान में इसमें रखना है. तो बेसिकली सबसे पहला, सिंस 2 molecules of acetyl coenzyme A, since 2 molecules of acetyl coenzyme A were formed, the Krebs cycle will repeat twice. ये बात ध्यान में रखिएगा, Krebs cycle जो है 2 बार चलेगा. तो अभी NADH2 कितना बन रहा है, तो पहले हम NADH2 फॉर्म्ड कैलकुलेट कर लेंगे. फिर उसके बाद FADH2 फॉर्म्ड कैलकुलेट करेंगे. फिर उसके बाद GTP फॉर्म्ड कैलकुलेट करेंगे. अब ये जो चीजें हैं हमें ध्यान देनी पड़ेंगी. तो NADH2 फॉर्म्ड कितना है, तो NADH2 फॉर्म देखो, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है. तो बेसिकली 3 NADH2 फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पर जो है हम बोलेंगे 3. FADH2 फॉर्म कितना है 1, GTP फॉर्म कितना है 1, लेकिन ये सब आप इंटू 2 कर दोगे क्योंकि 2 बार चल रहा है. सो लॉजिकली जो है ये होता है 6 NADH2, 2 FADH2 और 1 GTP, नहीं सॉरी 2 GTP बनेगा. सो इस तरीके से ये एनर्जी अकाउंट है. लेकिन जो NADH2 और FADH2 है बेसिकली ये ETS में जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है ये चेक है, तो ये बैंक में जाएगा. बैंक का नाम है ETS, और उसके बाद जाने के बाद ये ATP में कन्वर्ट होंगे. लेकिन 2 GTP डायरेक्टली 2 ATP में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि 2 GTP है. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये यूनिवर्सल है,
कि 1 NADH2 जो है वो 3 ATP के बराबर होता है, 1 FADH2 जो है वो 2 ATP के बराबर होगा, और 1 GTP जो है वो 1 ATP के बराबर होता है। दिस इज द यूनिवर्सल कन्वर्जन्स, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पर देखो NADH2 6 बना है, तो NADH2 अगर 6 बना है तो ATP जो है 18 हो जाता है, तो 18 ATP बना। FADH2 2 बना है, तो 2 FADH2 will give rise to what? You can say 4 ATP. So logically ETS से होने के बाद, ETS जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको 22 ATP मिलेगा, और ओवरऑल ETS से जब क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होगा तो 22 + 2 24 ATP मिलता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि क्रेब्स साइकिल में जो नेट गेन है, नेट गेन मतलब नेट जो एनर्जी मिलती है, नेट गेन जो है बेसिकली इट इज ऑफ 2 ATP, क्योंकि नेट 2 ही मिल रहा है, लेकिन टोटल ATP कितना मिल रहा है हमें, तो टोटल ATP हम बोलेंगे 24, क्योंकि यही 24 ATP टोटल है। मतलब हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, 22 + 2 को जोड़ा तो 24 बन गया। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाटर मॉलिक्यूल भी आ रहे थे जा रहे थे, तो वाटर मॉलिक्यूल यूज्ड कितना है, तो वाटर मॉलिक्यूल यूज्ड जो होगा वो होगा 3 × 2, दैट इज 6 वाटर मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड लॉस्ट कितना है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, दैट इज 2, सो 2 × 2 दैट इज 4 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको सिग्निफिकेंस एनर्जी अकाउंट के लिए जरूरी है, और ये चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसे कहते हो significance of Krebs cycle. When I use this word significance of Krebs cycle, it simply means कि Krebs cycle क्यों होना चाहिए और उसकी benefits क्या क्या है। So the moment we talk about significance of Krebs cycle, सबसे पहला Krebs cycle जो है ये common pathway है, तो हम कहते हैं it's a common pathway for breakdown. It's a common pathway for breakdown of fats एंड प्रोटीन्स। फैट्स और प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए सबसे कॉमन पाथवे है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि इसमें सबसे ज्यादा एटीपी बनती है, तो हम कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ एटीपी इज फॉर्म, तो लार्ज नंबर ऑफ एटीपी बन जाता है। और क्रेब्स साइकिल होता किसमें है, तो हम कहते हैं ओनली इन यूकैरियोट्स, जस्ट रिमेंबर दिस, क्रेब्स साइकिल सिर्फ यूकैरियोट्स में होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। और अमीनो एसिड्स भी सिंथेसाइज होते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रेब्स साइकिल, सो वी कैन से अमीनो एसिड्स आर synthesized from GTP और ATP। GTP और ATP से आपको अमीनो एसिड्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट जो होता है वो ये है कि नंबर ऑफ reduced coenzyme, number of reduced coenzyme is formed, like तो कौन कौन सा बनता है वापस, तो NADH2 बन जाएगा, FADH2 बन जाएगा, ठीक है, ये जो है बनता है, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम ATS, मतलब ETS में जाने के बाद ये वापस मिल जाता है। तो ये बेसिक बन गया आपका सिग्निफिकेंस क्रेब्स साइकिल, क्योंकि ये होने के बाद हमें ETS पढ़ना है। अब इसको लर्न करने के लिए क्या शॉर्टकट है, तो मैं आपको एक बता देता हूँ। एक कॉमन सेंटेंस आप पहले याद रखो जो मैं जनरली देता हूं, वो है ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना। ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल।
तो अगर आपको ये सेंटेंस आ रहा है तो आपकी मैक्सिमम चीजें जो है कंप्लीट हो जाएंगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब ओ ए। सिट्रिक का मतलब हो जाएगा सिट्रिक एसिड। A stands for aconitic acid. Is stands for isocitric acid. Of course जो होता है ना वो है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। A का फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। A इज फॉर अल्फा। सिली का फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सिली। स्टूपिड जो होता है बेसिकली वो क्या है? तो हम कहते हैं सक्सिनिक एसिड। अच्छा, फनी बेसिकली क्या होता है? तो हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। और मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? तो हम कहते हैं मैलिक एसिड। तो यहाँ पर ये सारे फुल फॉर्म्स आपको आने जरूरी है। अगर आपको ये सेंटेंस आ रहा है वो सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल, तो आप आराम से इसको याद रख सकते हो। और यही सारे नाम जो आप पढ़ रहे हो, यही सारे नाम को आपको क्या करना है? एक सर्कल में अरेंज कर लेना है। तो बेसिकली जब आप उसे सर्कल में अरेंज कर लोगे तो आपका आधा से ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। अब देखो हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उस सर्कल के अंदर जो है ये सारी चीजें फिट करने की हम कोशिश करते हैं। सो लेट अस टेक इट इन दिस बिकम्स माय सर्कल। ये बन गया सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर जो है हम सारी चीजें फिट करते हैं। तो पहले तो हम फिट करेंगे OA, तो ये बन गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। दूसरा हम क्या फिट करेंगे? तो हम कह देंगे सिट्रिक एसिड। तीसरा क्या फिट कर रहे हैं? तो हमने कह दिया एकोनाइटिक एसिड। चौथा क्या फिट कर दिया? तो हमने कह दिया आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड के बाद जो हमने फिट किया वो क्या है? तो हम कहते हैं ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड जो है जब फिट हो गया तो उसे हम किसमें कर देंगे? तो हम कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो हम कहते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो हमने कह देना है फ्यूमेरिक एसिड। और फ्यूमेरिक एसिड फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मैलिक एसिड। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो हम सबको आना जरूरी है। और इसी के ऊपर जो है सारे के सारे एलिमेंट्स बेस्ड है। मतलब ये OAA जो है ये पहला स्टेप करेगा और सिट्रिक एसिड बनाएगा। सिट्रिक एसिड सेकंड स्टेप करेगा, एकोनाइटिक एसिड बनाएगा। एकोनाइटिक एसिड थर्ड स्टेप करके आइसोसिट्रिक एसिड, फिर ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर सक्सिनिक एसिड, फिर फ्यूमेरिक एसिड, फिर मैलिक एसिड, और फाइनली जो है बन जाता है OA। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कैसे क्या होगा। तो एक बेसिक सा है कि जो भी कार्बन नंबर थे वो 4 थे, तो याद रखना 4 कार्बन से स्टार्ट होगा। तो व्हाट इज गोइंग टू एंटर हियर? तो यहाँ पे हमने लिख दिया ग्लूकोज। ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो ये जो है बेसिकली 6 कार्बन का 3 कार्बन, बेसिकली 2 कार्बन। तो यहाँ पर क्या एसिटाइल कोएंजाइम ए में से सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल आता है। तो जो कोएंजाइम ए है इट विल गो बैक, वो चला जाता है। तो लॉजिकली आपको क्या याद रखना है इसमें से? ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीज है। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ना, मान के चलो ये एक ऐसा इंसान है जो एसिटाइल को घर पे छोड़ने आ रहा है, उसको रास्ता नहीं पता था तो बता रहा है, तो उसने रास्ता बता दिया, तो बताने के बाद कोएंजाइम में वापस चला जाएगा और एसिटाइल आ जाएगा अंदर। तो 4 कार्बन और 2 कार्बन मिल गए तो बेसिकली कितना कार्बन बन जाएगा? तो हम कहते हैं 6 कार्बन। अब ये जो एसिटाइल है मेहमान है, तो OAA आ गया अंदर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम है, सिट्रिक एसिड। तो ये गेस्ट है, एसिटाइल आपके घर में आ गया तो ये आपका मेहमान हो गया।
तो जब मेहमान घर में आया तो हम उसे क्या करते हैं, सबसे पहले पानी ऑफर कर देते हैं। तो ये हमने पानी दे दिया। अब जो है पानी दे दिया तो बेसिकली द गेस्ट इज डिमांडिंग फॉर सिट्रिक एसिड, उसको मौसम्बी जूस वगैरह ऐसा कुछ चाहिए। तो हम बोलते हैं ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पानी को वापस ले लेते हैं और पूरे घर में ढूंढते हैं कि अपने को मौसम्बी जूस मिल जाना चाहिए, पर मौसम्बी जूस कहीं पे मिलता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, गेस्ट को वापस पानी दे देते हैं कि भाई हमारे पास जूस नहीं है, आप पानी से काम चलाओ। अच्छा, मेहमान आ गया तो सिर्फ पानी से ही तो काम नहीं चलाएंगे, तो हम उसे नाश्ता भी कराते हैं थोड़ा सा। तो नाश्ता के लिए हम अंदर दिखाते हैं। नाश्ता मतलब क्या, NAD, नाश्ता क्या बन गया, NADH2, नाश्ता। अच्छा, नाश्ता करने के बाद उसको कैसा लगा, तो जाहिर सी बात है उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये 6 कार्बन है, अच्छा लगा तो क्या करेगा, वो चैन की सांस लेता है, इज क्वाइट रिलीफ। तो सांस लिया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दिया। सो नाउ दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, ये एक कार्बन निकल गया तो 6 कार्बन का कितना हो जाएगा, 5 कार्बन। अब जो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड है ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, मतलब अब जो है ना, नाश्ता हो गया, रिलैक्स हो गया, दोपहर के समय में वो रिलैक्स होकर के नाश्ता कर रहा है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और NAD क्या बन गया, NADH2। तो ये हो गया। फिर ये जो है ये क्या बन जाएगा, तो हम कहते हैं 4 कार्बन का बन गया, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो बेसिकली हमको ध्यान में रखना है, वो ये है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में जो मेहमान था हमारा, दोबारा नाश्ता किया, अब उसको क्या है, टाइम पास करना था। हमें तो नहीं करना था, लेकिन उससे बैठ के यहाँ वहाँ की बातें करनी थी। तो लॉजिकली दोबारा नाश्ता करने के बाद उसमें ताकत आ जाती है, तो गॉसिपिंग स्टार्ट कर देता है। GDP का क्या बन जाता है, GTP, दिस इज कॉल्ड एज गॉसिपिंग। और ये जो कोएंजाइम ये है बेसिकली यहाँ से वापस चला जाएगा, सो इट गोज बैक टू एस अल्फा कीटो। अब ये जो है गॉसिप करना स्टार्ट कर दिया, हमें तो गुस्सा आ रहा है कि हम भाई तुम्हारे साथ नहीं बात करना चाहते इतना, तुम हमारे मेहमान हो, खाओ पियो जाओ, ठीक है। ये सब 4 कार्बन रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, लेकिन फिर भी वो गॉसिपिंग कर रहा है। तो हमें गुस्सा आता है, हमारा मन क्या करता है कि इसको फाड़ दूं, क्या फाड़ दूं, मतलब FAD का FAD, लेकिन मेहमान है, मेहमान को फाड़ नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते। तो मेहमान को पूछते हैं जाने से पहले क्या लोगे, तो हम कहते हैं जाने से पहले उसे पानी पिला देते हैं, एक बार फिर से उसे नाश्ता करा देते हैं, भाई ये लो, और फाइनली यू गो, टाटा बाय बाय। तो इस तरीके से जो है ना, आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। वाटर इन वाटर आउट, वाटर इन, फिर नाश्ता कराया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड, चैन की सांस लिया। सेकेंड टाइम जब वो नाश्ता कर रहा है, रिलैक्स होकर के कर रहा है, गॉसिपिंग स्टार्ट किया, हमें गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो गॉसिप कर रहा है, बट वी फील लाइक उसको फाड़ दो, तो FAD का FADH2, बट ऐसा कुछ करेंगे तो नहीं, तो इसीलिए हम लास्ट टाइम उसको फिर से पानी पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। तो ये पूरा जो है ऐसे बन जाता है। अब जो स्टेप्स है बेसिकली, स्टेप्स, तो स्टेप्स भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं स्टेप्स को दूसरे कलर में इसी में लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉड करके, ताकि आपको मिलेगा। पहला स्टेप है C, कंडेंसेशन। दूसरा स्टेप है D, डिहाइड्रेशन। फिर R, रिहाइड्रेशन। फिर O, ऑक्सीडेशन। फिर D, डीकार्बोक्सिलेशन। फिर OD, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। फिर P, फॉस्फोराइलेशन। O, ऑक्सीडेशन। H, हाइड्रेशन। O, ऑक्सीडेशन। तो इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट है CD रोडो डी, डी ऊपर छोटा है, CD रोडो डी पोहो। तो CD रोडो डी पोहो becomes the shortcut. C for condensation, D for dehydration, R for rehydration, O for oxidation, D से decarboxylation, OD से oxidative decarboxylation, P for phosphorylation, O for oxidation, H for hydration and O for oxidation. तो ये जो है स्टेप्स हो गए। बेसिकली इसको आप CD रोडो डी पोहो याद रखोगे तो स्टेप्स भी अपने आप आएंगे। अब एंजाइम्स की बात कर ले, बहुत सिंपल है एंजाइम्स को याद रखना। यहाँ पे सिट्रिक एसिड बन रहा है तो आप एंजाइम डाल दोगे सिट्रेट सिंथेटेज। यहाँ पे एकोनाइटिक एसिड बन रहा है तो एकोनाइटेज एंजाइम है। वाटर भी इसी का निकल रहा है तो एकोनाइटेज डाल दोगे, तो दोनों स्टेप पे एंजाइम एकोनाइटेज है। आइसोसिट्रिक एसिड क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब हाइड्रोजन लूज कर रहा है। तो आप ये एंजाइम का नाम लिखो, आइसोसिट्रिक एसिड,
और आगे लिख दो डिहाइड्रोजनेज। फिर ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड क्या कर रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो ये नाम लिखो ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड और लिख दो डी कार्बोक्सिलेज, सिंपल। फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड क्या कर रहा है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, तो यहां पर जो आप एंजाइम लिखोगे वो होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनाइल कोएंजाइम में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब फॉस्फेट आएगा, तो यहाँ पे जो एंजाइम लिखोगे वो है थायोकाइनेज। फिर सक्सिनिक एसिड जो है ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन लूज कर रहा है, तो आप एंजाइम लिखोगे सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। फ्यूमरिक एसिड में पानी आ रहा है तो एंजाइम हो गया फ्यूमरेज। मैलिक एसिड ऑक्सीडेशन कर रहा है तो हाइड्रोजन निकल रहा है, तो एंजाइम आप डालते हो मैलेट डिहाइड्रोजनेज। सो दिस इज हाउ you can remember your Krebs cycle in easy way. ETC, which is also known as ETS. Now when I use this word ETC, basically ETC means electron transport chain. So ETC is nothing but it is called as electron transport chain, that is nothing but ETC, electron transport chain. And when we use this word ETS, ETS also means same, it is nothing but it is electron transport system. So ETC or ETS both will have the same answer. What we need to understand here, very first thing, where it takes place. So in order to understand that why it takes place, let's understand this part. So in ETS we are going to cover three aspects. First we will talk why ETC or ETS is required. Then we will talk about the pathway of electron, how the pathway of electron is covered. Then we will talk about pathway of hydrogen ion or the H plus ion. Then fourth, we are going to talk about the location where it is taking place. Then fifth, we will talk about the end product. What is the end product formed during ETS? And sixth, we are going to talk about all the complexes. So these are the 6 different areas that we need to cover. The first question says why ETS is or ETS is required. So remember, glucose, we all have studied glycolysis, we all have studied link reaction and the Krebs cycle. What is the role of this glucose? We all have seen that in glycolysis there was formation of NADH2. In glycolysis what we saw that NAD, it got converted into NADH2. Now this conversion of NADH2 requires two things. So glucose will provide two things to the NAD so that it becomes NADH2. Now what are the two things? So one thing it requires is the electron, and second thing that is required is the H plus. So electron and H plus, when it goes to NAD, it will become NADH2. Now most important point is here that this NADH2 now, which is a complex form of energy, is going to enter into ETC, or even I can call it as ETS, and then it will be converted into basic currency of energy, that is ATP. So one is NADH2. Second option that we have is even FAD. In Krebs cycle we saw that FAD, it got converted into FADH2. Now for conversion of NAD to NADH2 we required an electron and H plus ion. Same thing will be required for the conversion of FAD to FADH2, that is electron and H plus ion. Now this FADH2 is not that much complex form of energy. So this FADH2 will also travel into ETC, or I can say ETS, and finally it will be converted into ATP. We all know the basic conversion. The basic conversion is what? 1 NADH2 will be equivalent to 3 ATP, and 1 FADH2 will be equivalent to, I can say, 2 ATP. Now here I have showed you why ETC is required, because this NADH2 and FADH2, they are complex form of energy. So that complex form of energy has to be broken by the help of this
particular cycle that is called as ETC or ATS. Now next question is where exactly it takes place, then location basically. So let's understand this very important stuff. We all have studied mitochondria. So this is the outer layer of mitochondria, this is the inner layer of mitochondria, and we all know that the outer layer, or instead of saying outer layer, let us put it as outer membrane. So this is the outer membrane of mitochondria. This I call it as inner membrane of mitochondria. Between outer membrane and inner membrane, you have seen space that was called as intermembranous space. Now this intermembranous space will play a very important role. So what we need to understand here, this what I'm drawing now is nothing but it is the intermembranous space, this area. This area is the intermembranous space, and this intermembranous space is going to play a very important role in ETS. For electron transport system, intermembranous space is going to play a very important role. Now the point here is the structure basically. What is there in the center? So in the center we say there is a matrix. So in the matrix what happens? In the matrix there will be Krebs cycle taking place, and finally the outer and inner membrane they will be involved. So this much section only we are going to focus on in case of ETS. Let's draw one of the part of this. So let us take this to be the outer membrane. Let us take this to be the inner membrane. So I put this outer membrane, inner membrane, intermembranous space. We all know that this membrane basically is made up of lipoprotein. In case of cell wall structure, if you remember, the lipoprotein. So if I zoom this small section, if I zoom this small section, then I will see that inner membrane is not just a single line. This inner membrane basically has different parts. It is lipid bilayer structure, where it is going to show the presence of head, and to this head what will be attached? The tail. So the outer membrane as well as the inner membrane, they are made up of lipoprotein. Now this is very important stuff. So this becomes the lipoprotein area. So inner membrane is not just a single line, as you can see in the diagram. It is made up of lipid layer, and in this structure only what will be present? All the enzymes will be present, complexes will be present, that will be helping in basically the formation or the completion of the ETS. So now wherever I will be drawing this inner layer, I will be focusing on only this much part. So I will be not drawing lipoprotein, I will be just drawing it like this. So it will be, let us take this to be the outer membrane. This area basically is nothing but the inner membrane. So this entire area is the inner membrane, and what you see in between is nothing but intermembranous space. This is what you need to understand. Now on the inner membrane, basically, if I put some color to the intermembranous space, that will be easy for you to understand. Now this is nothing but the intermembranous space, and the above one is the outer membrane, and this is the inner membrane. So this space is very much important, because all the reactions that will be taking place now will be focusing somewhere with respect to this space also. So I put in this way. Now this becomes your main place. Now in this inner membrane there will be different complexes involved, and these complexes, they are going to help in ETS, electron transport system. So what are the different complexes? Let me first put it in this way. Now this is your first complex that will be involved, so I call it as complex 1. This will be your second complex, so I call it as complex 3. Okay, so the order you have to remember, it is 1, 3, then we have 4. So 1, 3, and we have 4. So this is complex 1, complex 3, complex 4. You might be thinking, sir, where is complex 2? So complex 2 is somewhere here.
between complex 3 and 4. So this is complex 2. So complex 1, complex 3, complex 2 and complex 4. These are the different complexes involved in case of ETC, or even you can say ETS, that is electron transport chain. Now let's understand one very important thing, that all this reaction is purely based on NADH2 will break, it will give out its hydrogen, it will throw its hydrogen basically and the electron. Glucose has given NADH2 electron and hydrogen, no doubt, but NADH2 will throw its electron and hydrogen and finally it will be converted into energy. And the entire role, the entire game of ETS is in pathway of electron and what happens to the H plus ion. So when this electron and H plus ion keeps on traveling through these complexes, complex 1, complex 3, complex 4, 2, and finally it results in the formation of ATP, that is what is ETS, or it is also known as electron transport chain. And we need to study this complex in detail and how things are working on it. So let's go on to the very first part. So what I will be doing here, I will be drawing first the outer membrane. I will be making it large so that you understand things very clearly. This part is nothing but it is the outer membrane of the mitochondria. And there will be a space, no doubt. The space is basically called as intermembranous space. So what I will say, let us take it in this way. This dot dot structure is going to resemble the inner membrane. Now inner membrane, I told you, it is not thin, it has great space. So I take this entire space is considered as the inner membrane. So now this becomes your inner membrane, and the space between them, outer membrane and the inner membrane, this space is called as intermembranous space. So this intermembranous space will play a very important role. So in ETS, whatever NADH2 and FADH2 were synthesized, they are going to come here. So we are going step by step. Let us first draw all those complexes that are involved. So let us take this. This is the first complex that I will be putting here, and this I call it as a complex 1. So this is nothing but the complex 1. After this complex 1, we are going to have a complex 3. If you remember, I told you complex 2 is at the bottom, so this becomes complex 3. And after that we have the complex 4. So this I take it as the complex 4. And everything is taking place in the inner membrane basically. This is complex 4. And after that we have a complex 2. So let us take this area to be nothing but complex 2. So the point here is how we need to proceed. So let me first give a basically shape to the intermembranous space. This is intermembranous space. So this space is very important here, because whatever hydrogen ion that will be traveling here, it is going to travel via this structure and will be accumulated in the intermembranous space. So this is nothing but intermembranous space, the space where all the hydrogen ion will get accumulated. Now coming to the important part, what will happen? So very first I will say that in the Krebs cycle, or even I can say in the glycolysis, there was formation of NADH2. So that NADH2 from the glycolysis is going to travel into the ETS. So this NADH2 basically will come here now. This NADH2 is going to enter in the complex 1. NADH2 has been carrying two things. One is the electron and second is the hydrogen. So the electron will go here. Understand this. Electron will enter in the complex and hydrogen, leave it aside. Now what will happen here? This very important part. NADH2 will lose the hydrogen also. So I can say H plus
Now since it loses out H plus, this becomes what? NAD. Now the electron that is lost by the NADH2 is going to travel to FMN. FMN is nothing but it is flavin mononucleotide. From the FMN, now the electron is going to travel from the FMN. The electron is now going to travel in the FES. What is FES? So I can say it is iron complex, the cyan sulfur complex. Now this FES will now give the electron. Try to understand. This FES now will give the electron. The electron lost by the FES will be accepted by Q. Q is nothing but UbQnone. So I can say U, that is UbQnone. And when the electron accepts, it oxidation and reduction. So it is accepting the electron. So I can say that it will undergo oxidation, then it donates the electron, it will undergo reduction. So oxidation reduction is continuously going on. And at the same time, most important part, the hydrogen that was released, by NADH2 is going to come here and it combines with UQH2 and finally UbQnone becomes what? UQH2. Now this is very important part. Now from UQH2 what happens? The electron will travel here, only the electron, not the hydrogen. So you will ask, sir, where is that hydrogen now? So we need to understand here, the hydrogen that was there will be transferred. Basically hydrogen will be transferred here. So all the hydrogen will be pushed where? In the intermembranous space. It means the energy that was present in the electron, that energy is now forcing the hydrogen to move or to go back in the intermembranous space. Now this H plus ion is getting accumulated here. So UQH2 now gives the electron. Where the electron goes? So electron goes to cytochrome. Electron goes to cytochrome. So I can say this is nothing but cytochrome B6. From cytochrome B6 it goes to FES. From FES it goes to cytochrome C1. So this is the movement of the electron. Electron from cytochrome B6 goes to the FES. From FES electron goes to the cytochrome C1. Now what exactly happens? From cytochrome C1 the electron will be transferred. So the electron from the cytochrome C1 will be transferred to, that is called as cytochrome C. Cytochrome C is present somewhere not in the complex, it is present in between. So from cytochrome C now this electron is going to travel into the cytochrome A. From cytochrome A the electron is going to travel in cytochrome A3. And what happens to this finally we will see bit later. So from FMN the electron got transferred to FES. From FES electron got transferred to ubiquinone. From ubiquinone it got transferred to UQH2. It became, basically it accepted the hydrogen. So this UQH2 accepted the hydrogen that is present in the matrix and finally becomes UQH2. And this UQH2 will also give its hydrogen here, and when the hydrogen goes here, basically now it becomes what? Hydrogen gets accumulated in the intermembranous space. From UQH2 what happens? The electron goes to cytochrome B6. From cytochrome B6 the electrons travel to FES. From FES electron goes to cytochrome C1. Then it goes to cytochrome C, which is not in the complex, it is in between. And then it goes to cytochrome A, complex 4, finally A3. So what is happening here? All the hydrogen ions that are there will be transferred to the intermembranous space. Now logically what happens to this cytochrome A3's electron? So we need to understand here, the electron of cytochrome A3 is going to travel basically into the half oxygen. It is going to travel into the half
oxygen. So now what will happen? The H plus ion that is present, the water, the H2 basically is going to break, and when it will break up as H plus and H plus. So all these H plus, all these hydrogen ion will now be traveling into, all this H plus ion will be traveling into the intermembranous space. So this hydrogen ion is now getting accumulated here. So slowly and slowly you will observe that this hydrogen ion basically is getting accumulated in the intermembranous space, and this H2 combines with half O2, finally forming H2O. So H2O is nothing but it is the final product of ETS. Last electron acceptor will be cytochrome A3, and then it gives to half oxygen. So when the half oxygen takes the electron, let's understand this way. Half oxygen taking the 2 electron, it becomes half O2 minus minus. And this half O2 minus minus, when it accepts the 2H plus, it becomes H2O. So this H2O is nothing but, I can say it is the metabolic water, the water that was used in the Krebs cycle for hydration and dehydration and rehydration step. Now coming to the next important part with respect to cytochrome complex 2. So what exactly happens in the complex 2, that also we need to understand here. So in case of complex 2, it is very easy. It's going to talk about only one aspect, that is FES and FADH2. So what happens? In Krebs cycle, we have seen that FADH2 was also formed. So this FADH2 will be broken down into FAD. And finally what happens? The two things will be released. First thing that will be released will be electron, and second thing that will be released will be H plus ion. So what happens to this H plus ion? It's very simple. This H plus ion, it moves back, it gets accumulated in the intermembranous space. Now the electron of FADH2 is first accepted by, so we can say it is accepted by FES, that is iron sulfur complex. From FES what happens? The electron basically travels to UQ, that is ubiquinone. Then ubiquinone, basically this ubiquinone will now accept the hydrogen. So ubiquinone, if it is accepting the hydrogen, it will become UQH2. So now from UQH2 what happens? The hydrogen goes back, and this UQH2 will transfer the electron to cytochrome B6. So from here UQH2 transfers the electron, at the same time here also it transfers. And finally that electron goes to cytochrome B6 and the cycle repeats in this way. So when FADH2 enters, it enters in the complex 2. When NADH2 enters, it enters in the complex 1. So now what is happening here? When you observe this entire stuff very carefully, the hydrogen ion concentration is becoming very high in the intramembranous space. Now since the concentration of H plus ion is becoming very high in the intramembranous space, what will happen? The H plus ion now wants to move away. It wants to come in the matrix. Why it wants to come in the matrix? Because in matrix, hydrogen ion concentration is less. So just to maintain that equilibrium, the H plus ion now is trying to run. It is trying to escape. And when it is trying to escape means it will be coming in the matrix, but it cannot come on its own. It requires a pathway. Without pathway, it is not possible for the H plus ion to come here. So now what we are going to do here, for the H plus ion to travel, we are going to make a way. Now that way is nothing but it is by the help of the enzyme. And what is that enzyme called as? That enzyme is ATP synthase. So remember, ATP synthase is nothing but the most important enzyme that will help here. So for ATP synthase, just to draw it separately, let's take it separately so that we can understand things more clearly what was happening there. So this was your outer membrane, this is inner membrane. So this inner membrane is quite huge, so we have made it in this way.
and this is nothing but the intermembranous space. So this space that you're observing is intermembranous space. This intermembranous space, as I told you, is occupied by huge number of hydrogen ions, and this hydrogen ion has to travel back into the matrix. So it will be traveling by the help of a special enzyme. That enzyme is called as ATP synthase. So let's understand this now. What is here? All the H plus ion. All the H plus ion. So H plus ions, they have got accumulated here. All the H plus ion, they have got accumulated here. So this H plus ion has to move. And since it is moving from the intracellular space into the matrix, it will require a new complex. And that becomes your complex 5. And the complex 5 is nothing but it is ATP synthase. Complex 5 is nothing but it is ETC or ATP synthase basically. So what is ATP synthase? One of the enzymes that helps in the movement of basically the hydrogen ion. So let's understand how the ETC is going to work. So whenever we talk about ETC, we draw the diagram first. So let us take this. This is the basically the stalk, I can say, or let's take the stalk in this way. This is the head. So logically now this enzyme is called as ATP synthase enzyme. And this ATP synthase enzyme, basically it consists of two important parts. F0, F1 particle. This is also called as F0, F1 particle. So ETC can be called as, so we can say it is F0, F1 particle. ATP synthase, one of the most important enzyme that is involved in the movement of the H plus ion, because H plus ion cannot move on its own. It requires a pathway, it requires a space, and through that space only what will happen, the hydrogen ion is going to travel. Now this hydrogen ion is going to move through this ATP synthase enzyme, and this ATP synthase enzyme we also call it as complex 5. So this ATP synthase can also be called as complex 5. So in all, in totality, how many complexes are there? So we say that there are 5 complexes. All those complexes we are going to study in detail. We will be studying the different complexes, what are their name and how they are derived. All those things will be studied. Now this tail that you can see here is nothing but it is F0, and this head that you can see here, it is called as F1. So this ATP synthase is going to provide the hydrogen ion pathway that you can move from here. So the hydrogen ion now starts moving from the intermembranous space into the matrix. So just remember this, movement of H plus ion results in rotation of head of ATP synthase. So what happens, this H plus ion when it is moving, it will rotate the head of the F1 particle, and when it is rotating the head, it is generating some kind of energy, and because of that energy, the head, when it comes back to its normal position, what will happen, sufficient amount of energy will be generated where the ADP, that is adenosine diphosphate plus inorganic phosphate, will join together to form ATP. And how many H plus ion is required? The question is how many H plus ion basically moves, then one ATP will be generated. So in most of the books, they say for the movement of every 3 H plus ion, there is generation of 1 ATP. So this is how the hydrogen ion will travel, and this movement will go on till equilibrium is achieved. So equilibrium will not be achieved in easy way, but it will be done easily.
So just remember this till equilibrium is achieved. So let's understand the next part. What will happen? What are the different complexes? This also we need to talk about. So this is how the movement of electron and hydrogen ion takes place. So basically electron and the hydrogen ions, those are nothing but the energy which NADH2 is giving. And finally, let's talk about the different complexes. So what are the different complexes? For that again I need to draw the diagram. So this becomes your outer membrane. This becomes your inner membrane. So between the outer membrane and the inner membrane there was a space. So this space that we can see here, I can call it as intermembranous space. So this is intermembranous space. Now since we are learning complex, we don't need to talk about intermembranous space in detail. This is your complex 1, and after complex 1 we have complex 3. After complex 3 we are having complex 4, and between complex 3 and complex 4 you are going to have complex 2, and after complex 4 you are going to get the complex 5, and that complex 5 is nothing but it is the ATP synthase enzyme. So this becomes your complex 5. So let's talk about the very first complex. What is exactly happening here? So in complex 1 I can say that NADH2 got converted into NAD, and it has released two stuff here. One was the hydrogen ion and second one was the electron. The electron traveled into the FMN, then it went into FES. Hydrogen ion went combined with ubiquinone and became UbQH2, and then it went back. So here basically you can say there is removal of hydrogen. There is removal of hydrogen. So since there is a removal of hydrogen, I can say that the complex 1 is nothing but it is NADH2 dehydrogenase. NADH2 dehydrogenase is a complex 1 that is helping in the removal of the H plus ion. And finally, this all travels. Here it comes into the complex 3, and we all know that UQH2 formation is there. Finally it travels into cytochrome B, then FES, then C1. This we have studied. So complex 3 is basically talking about what? Cytochrome B, cytochrome C. So in short I can say that this complex 3 is talking about only cytochrome. So this complex, there is cytochrome B and cytochrome C1 that is present in the third one. So I can say complex 3 is nothing but it is cytochrome B C1 complex. And whenever it comes to the complex 1, it is NADH2 dehydrogenase complex. So like this you can remember the first and the third complex. Coming to the second one. Second one was talking about FADH2. If you remember, we told that FADH2 will be converted into FAD, and finally the electron and the hydrogen will be entering here, and hydrogen will travel into ubiquinone that we have seen. So what exactly is happening? FADH2 is getting converted into FAD, but from where FADH2 was getting hydrogen? So if you remember this step of Krebs cycle, there was something called as succinate or succinic acid, which got converted into fumarate. And finally the hydrogen was released, and that hydrogen resulted in the synthesis of FADH2 from FAD. So here who is losing the hydrogen? So we can say succinate is losing the hydrogen. Since succinate is losing the hydrogen, I put this complex 2 as succinate dehydrogenase complex. So remember, complex 2 is nothing but it is succinate dehydrogenase complex. So this becomes the complex 2. And we have the complex 4. So what was exactly happening in complex 4?
From cytochrome C, the electron traveled into cytochrome C1 to C, then it went into cytochrome A, then it went into cytochrome A3. So here there is a very important step going on. So I can say here is oxidation of cytochrome taking place. So I can say that this complex basically is nothing but it is cytochrome C oxidase complex. So complex 4 is nothing but it is cytochrome C oxidase complex, because cytochrome C got oxidized. So it became what? Cytochrome C oxidase complex. So in this way, you got the complex 4. And finally, the fifth complex, we all know about it. It will allow the movement of the H plus ion through it. And finally, when 3H plus ion has reached here, it will generate sufficient amount of energy so that the ADP gets converted into ATP. So this is nothing but your complex 5. It is not complex 4. It is complex 5. So the complex 5 here is ATP synthase. Complex 5 is nothing but ATP synthase. So these are all different complexes involved. So let me just write it again for you so that you understand what exactly is happening. So we have different complexes playing its important role, and we have to remember the names of those complexes. So I put it first as complex 1, then I will put as complex 3. After that I will talk about complex 4. Then we will talk about complex 2, and at the last we are going to talk about complex 5. These are different complexes that are formed. So what was the name of complex 1? So we have seen it is nothing but NADH2 dehydrogenase complex. So this is NADH2 dehydrogenase complex. Complex 3 is nothing but it is a cytochrome BC1 complex. Cytochrome complex 4 is nothing but it is cytochrome C oxidase complex. Then we have complex 2, and that complex 2 is nothing but it is succinate dehydrogenase complex. Succinate dehydrogenase complex. And at the last we have complex 5, that is nothing but ATP synthase complex. So these are all 5 different complexes which are involved in the ETS, and this is how the hydrogen ion travels, and finally it results in the synthesis of ATP. So movement of 3 hydrogen ion will result in the synthesis of 1 ATP molecule. Now the point comes here, what is the significance of ETS? Why ETS is so much important? So let's understand the significance of ETS. So whenever we talk about ETS, very first there are some other important points also to be kept in mind. We all know that one NADH2 is going to result in the synthesis of 3 ATP. So where are those 3 ATPs formed? So the first ATP will be formed between, or it is because of NADH2 and FMN. That is first ATP. Second ATP that will be released, so it is between cytochrome C1 and C. The third ATP that will be released, it is between A and A3. So that is nothing but cytochrome A and cytochrome A3. So I can say between cytochrome A and cytochrome A3. So this is how the 3 ATPs are formed. Let's understand this significance. Very first point I will say that ETS generates maximum
ETS generates maximum amount of energy. ETS generates maximum amount of energy in form of ATP molecule. So out of 38 ATP that is released by breakdown of 1 glucose, we will say that out of 38 ATP, 34 ATP is released through ETS. So out of 38 ATP, 34 ATP is released through ETS. Then next, what comes in picture? ETS is going to provide water molecule. ETS provides water molecules required for Krebs cycle, because the end product of ETS was water molecule, so that will enter in the Krebs cycle. And this ETS, most important, it releases energy in stepwise manner through various complexes. If it releases energy suddenly, what will happen? The cell will burn out, it will burst out, it will die. So here the energy is released in stepwise manner. Why? To prevent damage to cell. So whatever energy that was there in the electron or in the hydrogen ion, that was released slowly and slowly. The next significance is ETS basically regenerates oxidized coenzyme. ETS regenerates oxidized coenzyme such as NAD, FAD for recycling, because they will again go in the Krebs cycle and they will become NADH2 and FADH2. And last, we need to understand each hydrogen releases 3 ATP. Now there is a point here which I have mentioned, that ETS out of 38 ATP will release 34 ATP. So I am just giving you a calculation for 34 ATP. So when we studied glycolysis, there was formation of 2 NADH2. And when we studied link reaction, there was formation of 2 NADH2. And whenever we studied this Krebs cycle, in Krebs cycle there was formation of 6 NADH2 as well as 2 FADH2. So 6 NADH2 and 2 FADH2 were formed. So this all will be traveling in the ETS and finally it will be converted into ATP. So let's take a look. When 2 NADH2 glycolysis comes, so it became 6 ATP. 2 NADH2 of link reaction, 6 ATP. 6 ATP of Krebs cycle, 18 ATP. And 2 FADH2 means 4 ATP. Just total it up, you will get the answer as 34 ATP. It means maximum energy is released through this ETS, which is taking place at the intermembranous space. So hope you have understood this energy account. Energy account means how 38 ATP is released. What are the different phases and steps for release of 38 ATP? So very first, we need to understand the first event that takes place during respiration is glycolysis. So in glycolysis, ATP formed was equal to 4 ATP and ATP used was equivalent to 2 ATP. We will not discuss about NADH2 here because NADH2 has gone in ATS. So not to discuss about this. So how the ATP formed is how much? 4 ATP. So point here is how and where these 4 ATPs are formed. So very first, between 1,3 di-PGA to 2 PGA, there is formation of 2 ATP. At the same time, when there is a conversion of phosphoenol pyruvic acid
to pyruvic acid, there is formation of 2 ATP. So like this, 4 ATP is formed. ATP used is 2 ATP. So the first ATP is used when there is a formation of glucose to glucose 6 phosphate. That time 1 ATP was used. And when there is a conversion of fructose 6 phosphate to fructose 1,6 diphosphate. So there also 1 ATP was used. So logically out of 4 ATP, 2 ATP is used up. So we will say that total net gain of ATP in glycolysis is equal to 2 ATP. 2 NADH2 was formed, no doubt, but that NADH2 will travel in the ETS, so it will be calculated in the ETS, not in glycolysis. The next step is the Krebs cycle. In Krebs cycle also, there was formation of ATP. So ATP formed was equivalent to 2 ATP. Now where this ATP was formed? So let's understand in this way. When there was conversion going on, reaction step, where succinyl coenzyme A got converted into succinic acid. So at that place, basically, GTP was formed. So 2 GTP. But this 2 GTP corresponds to 2 ATP because 1 GTP was equivalent to 1 ATP. So we can say that in glycolysis, net gain is 2 ATP. In Krebs cycle also, when it comes to net gain of ATP, it is equivalent to 2 ATP. Now coming to the last but most important, that will give us 38 ATP, that is ETS, electron transport system. In ETS, the energy is going to enter basically in the form of NADH2. So from NADH2 we will get some amount of ATP, and from FADH2. So when it is from NADH2, we need to understand that this NADH2 which has entered in ETS from glycolysis is a 2 NADH2, from link reaction is 2 NADH2, and finally from Krebs cycle is 6 NADH2. So logically in totality you will get 10 NADH2, and from FADH2 there will FADH2 is formed only in Krebs cycle. So you get only 2 FADH2. Now let's calculate. 1 NADH2 corresponds to 3 ATP and 1 FADH2 corresponds to 2 ATP. So 10 NADH2 into 3 will be equivalent to 30 ATP. 2 NADH2 into 2 is equal to 4 ATP. And when you put it as a total basically, or even I can say net gain. So in ETS now, the total ATP will be what? So let's take it in this way. Through ETS, the net gain of ATP is equivalent to 34 ATP. So finally, you understood that there are total 40 ATP involved
Out of 40 ATP, 2 ATP is used up. So we get how much? 38 ATP. So when I combine all this and when I study, I will say that this one glucose, it will be broken down in 1 second to give you energy in the form of 38 ATP. So this is how there is a formation of ATP by breakdown of one glucose. This is overall energy account. Let's talk about the next one. We are going to see now anaerobic respiration. Now this is also very important part. So let's focus on anaerobic respiration. So use this word anaerobic respiration. What are the key points for anaerobic respiration? So the very first key point is in anaerobic respiration there is incomplete oxidation of respiratory substrate. There is incomplete oxidation of respiratory substrate. In absence of, see the absence word is not correct, we can say in less, but for the time being we will say in absence of oxygen. If there is no oxygen present, then there will be incomplete oxidation of glucose to yield what it will give out. So it will give out carbon dioxide and ethyl alcohol as a byproduct. Now whenever it comes to anaerobic respiration, there are 3 steps involved. Which are those 3 steps? Very first step is glycolysis. Second step is decarboxylation. And the third step is reduction. So we have 3 steps involved: glycolysis, decarboxylation and reduction. Let's explore each step. So very first we are going to talk about glycolysis. Glycolysis is the common step. It takes place in aerobic as well as in anaerobic. So glycolysis, I can say it is one of the common steps. What goes on in glycolysis? There is a glucose molecule which is of 6 carbon. This glucose molecule is broken down to give you 2 pyruvic acid which is of 3 carbon, plus it will give you 2 ATP plus 2 NADH2. This 2 NADH2 form will be used up in the further process. Now this is what we have written in words. Let's put it in formula. So it says C6H12O6. When it is broken down, it will give you 2CH3 C double bond O COH. So this is the formula for pyruvic acid, plus 2 ATP plus 2 NADH2. So this is glycolysis in formula. After glycolysis, the second step that is going to take place is called as decarboxylation. So when I say decarboxylation, what happens? From the pyruvic acid, carbon dioxide will be released. That is decarboxylation. So we have 2 pyruvic acid which is of 3 carbon. It's broken down to give you 2 acetaldehyde that will be of 2 carbon, plus what is given out is carbon dioxide. So instead of showing here, let me show it here. There is loss of 2 carbon dioxide. This reaction takes place in the presence of enzyme decarboxylase.
There is some catalytic factor also involved, TPP and zinc ion. Now when I go with respect to the formula, 2-pyruvic acid formula is 2CH3 C double bond O COH. Now it is breaking down to give out carbon dioxide. So remember, it is this COO which is lost, and as a result what happens? Carbon dioxide is lost. Why? Two, because two molecules are involved. Enzyme involved will be decarboxylase. The catalytic factor will be TPP as well as zinc ion. So here I can say it becomes what? 2CH3 C double bond O H. This is nothing but acetaldehyde. Point here is, what is the full form of TPP? So remember, TPP stands for thymine pyrophosphate. TPP is thymine pyrophosphate. So this TPP is nothing but, if you look at it very carefully, it is the derivative of vitamin B1. So this is the second step, decarboxylation, formation of acetaldehyde. Now going for the third step. The third step here, basically, the second step was decarboxylation. The third step is reduction. Now when I use this word reduction, so logically what is going to happen? That this carbon dioxide, acetaldehyde, whatever is formed, now it will undergo reduction. Means what? The 2-acetaldehyde that was formed, the 2-acetaldehyde undergoes reduction, means it will take oxygen. So remember, it will take hydrogen. So remember, this NADH2 which is formed in glycolysis will be used up in the reduction step. It means that this NADH2 is lost. So how things work? It goes like this: 2NADH2 gets converted into 2NAD, and finally what is formed? We say 2-ethyl alcohol. So this is how you get 2-ethyl alcohol. So we have 2 carbon and we have 2 carbon. Now this takes place in the presence of enzyme, and the name of the enzyme is dehydrogenase. This is very important. How to write it in formula based? So remember the formula of acetaldehyde: 2CH3 C double bond O H, and finally this double bond of O will be broken down and hydrogen will be added. So 2NADH2 gets converted into 2NAD in the presence of enzyme dehydrogenase, will give you CH3 CH2 OH. That is nothing but ethyl alcohol. Now how it is formed? So just to give an explanation, CH3 C double bond O H. So hydrogen, when it enters, this hydrogen is going to first break the double bond. So here one double bond will be broken, and finally we get one H here, and another H will be for balancing the carbon bond. So like this. So one H and one H is utilized here. So you get it as CH3, then you got CH2. This is CH2, 1, and OH. This is how ethyl alcohol is formed. So the end product of anaerobic respiration is nothing but ethyl alcohol. So these are the 3 different steps in which anaerobic respiration takes place. Let's talk about the next important topic, that is called as fermentation. Fermentation means what? It is another topic. Fermentation, in this we are going to study about lactic acid fermentation, alcohol fermentation. All those fermentations we are going to study. So fermentation basically has came from a Greek word. The word is fervous. Fervous logically means what? It means bubbling effect.
So you see any fermented food stuff, they will have lots of bubbles or holes in it. Whether it is bread, dhokla, any fermented food will have hole. That hole is nothing but it is the carbon dioxide gas that was occupied. And once it has escaped, it has left small holes. Even in idli, dosa, all will have small holes in them. Fermentation is brought about by microorganisms. How many types of fermentation are there? Two types. Very first type is alcohol fermentation. The second type is lactic acid fermentation. How the lactic acid is formed? Now, alcohol fermentation will take place in all the prokaryotes. But lactic acid takes place in human also, in muscles, fatigued muscles. Alcohol fermentation, no doubt, in prokaryotes. But whenever we talk about lactic acid fermentation, it is in eukaryotes also, like humans. Our muscles basically shows such kind of fermentation, lactic acid formation. Even conversion of milk into curd shows the process. Let's talk about the first one. That is nothing but alcoholic fermentation. So I take the first fermentation, that is alcohol. So it is the process of formation of alcohol. What is going to happen here? Very first we are going to talk about C12H22O11. This is nothing but sucrose. And this sucrose will be broken down by the hydrolysis, by the entry of water. It is broken down to give you glucose and fructose. So we have C6H12O6. This is nothing but glucose. Then we have C6H12O6. This is fructose. We are going to use glucose for fermentation. So I put it as C6H12O6. In the presence of yeast, yeast is going to produce one enzyme. So the enzyme here is zymase. And it gives what? 2C2H5OH, that is ethyl alcohol, plus 2 carbon dioxide. So now this is what is produced as alcohol. And this alcohol is used in sanitizer, is used for drinking purpose, is used for making alcohol, anything, antibiotic, vitamins, alcoholic fermentation. So alcoholic fermentation basically is used for alcohol, antibiotic, or even I can say vitamin production. Now this becomes an important part here. Second type of fermentation that we need to study is lactic acid fermentation. So when it comes to lactic acid fermentation, remember there is no decarboxylation. So what exactly happens here? First, there will be glycolysis taking place in lactic acid. After glycolysis, there will be direct reduction. No decarboxylation. So what is there in case of glycolysis? So I say glucose, which is of 6 carbon, will be broken down into pyruvic acid, which is of 3 carbon. How many will be formed? 2 plus 2 ATP plus 2 NADH2. Now this 2 pyruvic acid formed will undergo reduction. Directly it will undergo reduction. Means the 3 carbon compound is undergoing reduction. Means the 2 NADH2 will be used up here and there will be formation of 2 NAD. And finally, once it has undergone reduction, it results in the formation of lactic acid. And this lactic acid will be of 3 carbon. This is also of 3 carbon. Let's put it in formula so that it becomes easy for you to understand. So it is nothing but 2 CH3 C double bond O COOH. Now this pyruvic acid
is undergoing reduction. So we have 2NADH2 getting converted into 2NAD. Now when this double bond will be broken down, hydrogen is going to occupy the space. So it is 2CH3 CHOH COOH. Now this becomes the formula for lactic acid. This is how lactic acid production or fermentation takes place. What are the uses of this? So whenever it comes to uses of lactic acid, remember it is used for curdling of milk. So whenever there is milk getting converted into curd, lactic acid is used. Then at the same time, it is produced in fatigue muscles. When we run, we get tired or there is a formation of cramps, you can say. Cramps occurs in our body. So that cramp formation and all is because of lactic acid formation. Next, we are going to talk about one very important topic that is called as exchange of gases. When I use this word exchange of gases, in this case, animals, they have different mechanism. Plants, they have different mechanism for exchange of gases. So when it comes to animals, what we do, so we say we take in oxygen and give out carbon dioxide, and it is only by the help of lungs. We talk about plants. In respiration, they respire during night time. They also take in oxygen and give out carbon dioxide. But this taking in oxygen and giving out carbon dioxide is through stomata. If not stomata, then lenticels, which is present on the woody bark of the tree. These are the two openings. So this is how respiration goes on in case of animals and plants. Animals, you can say it is throughout day and night. But in plants, this respiration takes place in night. That's why it is always advised not to sleep under a tree during night time. So this becomes the exchange of gases. Very important part is germinating seeds. Germinating seeds respires at faster rate. Remember this. The seeds which are germinating, they are going to respire at a faster rate, whereas the root, stem and leaves respires less. So they have very less rate of respiration. There is one very important word that we need to focus on. It is called as RQ. RQ is logically nothing but it is respiratory quotient. RQ is respiratory quotient. What is respiratory quotient? So we can say this RQ, it is defined as ratio of, here we are going to take ratio of volume of carbon dioxide evolved to volume of oxygen consumed. So if we remember the respiration reaction, in that we can calculate how much carbon dioxide is evolved and how much oxygen is consumed in respiration. So that is what is RQ. So just try to take out the respiratory quotient. The symbol, basically we can say respiratory quotient is denoted as RQ. So here we are going to calculate RQ of carbohydrate, fats and proteins. So remember, carbohydrates only will undergo aerobic as well as anaerobic. So in carbohydrates we are going to calculate with two terms.
One is when it is undergoing aerobic respiration that time, and when it is undergoing anaerobic respiration that time. So let's talk about the RQ, the respiratory quotient. And it is very important to remember this. Let me just write the formula for you first so that you can easily calculate. RQ is equivalent to volume of carbon dioxide evolved upon volume of oxygen consumed. Now I will be focusing first on carbohydrates. So whenever we talk about carbohydrates, first there will be aerobic. First let's talk about aerobic and then we talk about anaerobic respiration. If there is aerobic respiration going on, so in aerobic respiration, logically what will happen? We will say C6H12O6 plus 6 oxygen will be broken down to give you 6 CO2 plus 6 H2O plus 38 ATP. This is aerobic respiration. Put it in the formula. RQ is equivalent to amount of carbon dioxide evolved. So we say 6 carbon dioxide evolved upon volume of oxygen consumed. So it is 6. So we say 6 oxygen consumed. And when you take 6 by 6, that is nothing but 1. So remember, RQ for aerobic respiration is equal to 1. This is first one. Second, we will talk about anaerobic respiration. Now when it comes to anaerobic respiration, so it is C6H12O6, no oxygen, gives out 2 CO2 plus 2 C2H5OH plus 2 ATP. Now let's calculate. RQ is equivalent to 2 carbon dioxide evolved, because we can see that 2 carbon dioxide molecules evolved. Oxygen consumed is 0, so we can say 0 oxygen consumed. And 2 upon 0, we all know nothing can be divided by 0, so it is infinity. So for anaerobic respiration, we need to understand that RQ is nothing but it is infinite. So this is how carbohydrates perform aerobic and anaerobic respiration, and we can see the RQ. Next we have for proteins. So for proteins, you have to remember directly that RQ is equal to 0.9. How to remember? It's very easy actually. This is P for protein. Just take P dot. So the mirror image becomes this. So it becomes 9. So like this you can remember 0.9 is for protein. Second one is for fats. For fats also the RQ is equal to 0.7. How to remember? Again it's very simple. We have fat F. Just take the mirror image of this. It comes something like this. So it is 0.7. So like this you can remember. For fat, let's write one equation to understand this. So we have 2 C51 H98 O6 plus 145 O2 will break down to give you 102 carbon dioxide plus 98 H2O. And when you take the RQ of this, so RQ is nothing but it will be 102 CO2 evolved upon 145 oxygen consumed, that will come somewhere around 0.7. So this is how easily you can calculate the RQ for fats. Very important point to be kept in mind is for organic acids. So remember, the RQ for organic acid is always greater than 1. For aerobic respiration it is 1,
but for organic acid it is more than 1. So this is the argument. There is a very important point that we all need to remember. It is called as compensation point. So what do you mean by this word compensation point? So when I say compensation point, it is nothing but the point at which compensation point is nothing but the point at which amount of carbon dioxide given out and oxygen taken in is same. Or even you can reverse the situation, like amount of carbon dioxide taken in and oxygen given out, it's same, then it is called as compensation point. Means at any point of time I can say where the oxygen and the carbon dioxide becomes equal, that point is called as compensation point. Means oxygen taken in, carbon dioxide given out is same, then it is compensation point. Oxygen given out or carbon dioxide taken in, then that point is called as compensation point. There are few other topics also. So we are having the next important topic, that is called as amphibolic pathway. Till now we have seen that respiration was considered as a catabolic pathway. We call respiration as catabolic pathway. But later on it was identified respiration, no doubt it is catabolic. Along with catabolic, respiration is also called as amphibolic pathway. Now when I use this word amphibolic, it simply means one thing, that apart from glucose, fats and proteins also can be used. Apart from glucose, fats and proteins also can be used for respiratory substrate. It has more than one substrate for respiration, therefore it is called as amphibolic pathway. So amphibolic pathway is logically nothing but when more than one substrate, when more than one substrate can take part in a reaction, more than one substrate can take part in a reaction, then it is called as amphibolic pathway. So let's understand how things are going to work. So I will be writing three things. First is carbohydrates. Second, I write it as fats. And third is protein, because these are the three things that we normally eat. Carbohydrates will be broken down into glucose. Fats will be broken down into fatty acid plus glycerol. Proteins will be broken down into amino acids. So these are the units. So glucose gets converted into pyruvic acid. This pyruvic acid, it will then be converted into acetyl coenzyme A. Now this acetyl coenzyme A will enter in the Krebs cycle. When it comes to fatty acid is broken down into, or we can say it is degraded. So when fatty acid is degraded, it is degraded into again into acetyl coenzyme A. So this acetyl coenzyme A will enter in the
Krebs cycle. Now we have something called as glycerol. This glycerol is first converted into DHAP, then DHAP gets converted into PGAL, that is phosphoglyceraldehyde, which is then converted into pyruvic acid. And finally, this pyruvic acid gets converted into acetyl coenzyme A. And when it comes to proteins, they are broken down into amino acid. Amino acid will follow two important reactions. Basically, it undergoes deamination, and after undergoing deamination, it is going to form first pyruvic acid, and second, it will form acetyl coenzyme A. So this amino acid will be broken down into pyruvic acid and acetyl coenzyme A. Pyruvic acid finally gets converted into acetyl coenzyme A. So logically, if you take a look here, whether it is carbohydrate, whether it is fats or proteins, everything is getting converted into acetyl coenzyme A. So the end reaction where they are going to meet, no matter whether fat, proteins or carbohydrate, is acetyl coenzyme A. Now this acetyl coenzyme A, all these acetyl coenzyme A will enter in a very common reaction that is called as Krebs cycle. So for Krebs cycle, we have carbohydrate also entering into Krebs cycle. We have fats also entering into Krebs cycle. We have proteins also entering into Krebs cycle. It means no matter whether carbohydrate, fats or proteins, each and every foodstuff will follow Krebs cycle. It means for carbohydrate, there is Krebs cycle. For fat, there is a Krebs cycle. For protein also, there is a Krebs cycle. So for one respiration reaction, carbohydrate, fats and proteins all can be used as a substrate. And since there is more than one substrate, we call respiratory pathway as what? Amphibolic pathway. So this becomes the very important part, amphibolic pathway. Let's look at the significance of respiration. Why respiration is considered as important part? So I can say significance of respiration. So when it comes to significance of respiration, very first point, since it produces energy, I can say it is the source of energy for cell division. It is a source of energy for growth. It is a source of energy for replacement. So any damage that takes place in your body will be repaired by the help of ATP that is produced by respiration. Respiration, it maintains oxygen and carbon dioxide level in the atmosphere. So respiration and photosynthesis together, they are responsible for maintaining the atmospheric oxygen carbon dioxide level. And when we talk about anaerobic respiration, so we need to remember that anaerobic respiration is used in industrial process. So in industries, basically anaerobic respiration is used for production of alcohol, antibiotic and medicines. In case of respiration, we need to understand that the energy is used to convert insoluble substances. Energy is used to convert insoluble substances into soluble substances. So all the insoluble substances will be converted into soluble substances. That is what is significance of respiration. There are some important words also. So let's take a look at that. That plays a very important role in your NEET concept. First, we need to understand types of respiration. So whenever I talk about types of respiration, there are two types. We all know it as
aerobic respiration and anaerobic respiration. So we have aerobic respiration and we have anaerobic respiration. Now in aerobic respiration there is two types. The very first is there can be obligate aerobes or it can be facultative aerobes. So the first type is obligate aerobes. The second type is facultative aerobes. In obligate aerobes means these are those aerobes that will respire only in presence of oxygen. So if there is no oxygen, they will die. This is called as obligate aerobes. When I say facultative, it means they normally respire usually in oxygen, but if oxygen is absent, still they can survive. So we can say but can survive without oxygen. So this is called as facultative aerobes. And the example for this, we have yeast, we have parasites. Now parasites, those are present in intestine. So this becomes the obligate and facultative aerobes. When I talk about anaerobes, again there are two types of anaerobes. The very first type will be obligate anaerobes. When I say obligate, is simply means it is fixed, that it cannot change its nature. But when I say facultative anaerobes, it simply means that it can change its nature as per the requirement. So we have obligate anaerobes and we have facultative anaerobes. So when I talk about obligate anaerobes, it means they are going to respire only anaerobically, that is in the less oxygen or absence of oxygen. But if oxygen concentration increases, then what will happen? It gets killed. So it simply means that these microorganisms will die if the oxygen concentration increases. That is obligate anaerobes. When I say facultative, it means they are primarily anaerobes, but can respire even if oxygen concentration increases. Now the general example that we have in facultative anaerobes, we have Clostridium botulinum. This is one of the example. The second example that we have is Clostridium tetani. So these are the two major types of respiration. Whenever we talk about energy, the energy that is released by the breakdown of one glucose molecule. So energy is going to correspond to 38 ATP. And these 38 ATP basically it is equivalent to 686 kilocalorie. And since it is providing you energy, I can say, therefore, respiration is also called as energesis. Energesis means what? It provides energy. Now coming to the substrate, the different types. So let's understand here again there is a types of respiration. Now these types of respiration is not based on the presence or absence of oxygen. This type of respiration is based on the substrate level. So it is at substrate level respiration. So here very first let's talk about with respect to carbohydrate. So very first we are talking about carbohydrate.
After carbohydrate, we will talk about fats. After fats, we will talk with respect to protein, because these are the major substrates that can be used for respiration. So 1 gram of carbohydrate, it has 4.4 kilocalorie or 18.4 kilojoules of energy. And when we use 1 gram of fat, so we can say 1 gram of fat has 9.8 kilocalorie of energy or 41 kilojoules of energy. When it comes to protein, 1 gram of protein has 4.8 kilocalorie, or I can say 20 kilojoules of energy. So when I look at this energy level, I understand that fat is having the maximum energy. After fat, there is carbohydrate. After fat, there is a protein, and then there is a carbohydrate. So the carbohydrate involved in respiration, it is called as floating respiration. Carbohydrates, or even I can take it in this way, or let's say the floating respiration. Even the fats, when they are involved in respiration, that respiration is called as floating respiration. So remember, carbohydrates and fats, they have floating respiration, and this floating respiration was given by one of the scientists in the name of Blackman. And when you use protein as a substrate, then it is called as protoplasmic respiration. It is called as protoplasmic respiration. So remember, carbohydrate and fats, they are floating respiration, whereas the protein is going to act as the protoplasmic respiration. Let's understand few important points as far as glycolysis is concerned. These all are one-liners but very important for your NEET exam. So with respect to glycolysis, I will say that net gain of ATP is 2 and total ATP will be 8. So net gain is 2 and total gain of ATP will be equal to 8 ATP. Here what exactly happens in glycolysis? So we say C6H12O6, that is glucose, gets broken down into two molecules of C3H4O3, that is pyruvic acid, plus 4H plus. This 4H plus is nothing but, it is with respect to, this 4H plus is nothing but, it is with respect to the NADPH. And in glycolysis, the most important is magnesium ion. So I can say Mg2 plus ion, where it is used. So it is used in steps such as 1, 3, and 9. So 1, 3, and 9 is going to have Mg2 plus used. Very important for NEET exam is that PGAL. Whenever we talk about glycolysis, PGL is phosphoglyceraldehyde. This PGL is a substrate level of phosphorylation. So PGL is substrate level of phosphorylation. Means if there is phosphorylation taking place at substrate level, it will take place in the PGL. Next, what we need to understand, there is something called as linked reaction. So in linked reaction also, there is a very important concept with respect to your NEET exam. TPP, that is thymine pyrophosphate, which is also known as LAA, that is lipoic acidamide. So let me just write the full form for you. TPP stands for thymine pyrophosphate, or we have LAA. LAA stands for lipoic acid amide. So lipoic acid amide or TPP, this is very important cofactor for link reaction, and they play a very important role. Some cofactors which are involved in linked reaction are, I can say Mg2 plus, vitamin B, because thymine is nothing but it's a vitamin B1. We have NAD plus, we have coenzyme A is required. And next we need to talk about with respect to Krebs cycle. In Krebs cycle also,
So important point. The very important question which came in NEET was with respect to succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase is that enzyme which is responsible for conversion of basically succinic acid, succinyl coenzyme A, succinic acid. It is nothing but it is mitochondrial marker enzyme. So remember, it is mitochondrial marker enzyme. And this succinate dehydrogenase, where it is located, so I can say it is located in inner mitochondrial membrane. So it is located in inner mitochondrial membrane. Next important part is oxidation of, because sometimes they ask question, oxidation of one molecule of acetyl coenzyme gives what? So oxidation of one molecule of acetyl coenzyme A will involve certain important criteria. So what are those stuff? So let's understand this. We have, it gives out 2 carbon dioxide, very important. Then it gives out 4 pairs of hydrogen ion. Now why 4 pairs of hydrogen? Because there is formation of 3 NADH2 and 1 FADH2. So it will give out 4 pair of hydrogen. It produces 1 GTP, that is the source of energy. So total, we can say total ATP produced by one molecule of acetyl coenzyme A is equal to 12 ATP. And if they ask with respect to complete 2 molecules, you have to just multiply by 2. So carbon dioxide given will be 4, H plus given will be 8 pairs, GTP produced will be 2, and ATP produced will be 12. Next, we need to talk about the 4 or 5 complex theory. So when I say 5 complex theory, this 5 complex theory I will be talking about with respect to ETS, that is electron transport system, or even you can call it as ETC, that is electron transport chain. We have studied in ETS that there are different complexes formed. Very first, there is something called as complex 1. After complex 1, we have complex 2. After complex 2, we have complex 3. After complex 3, we have complex 4. And after complex 4, we have complex 5. So these are the important complexes that we study in ETS. So what we need to understand here? Complex 1 is nothing but it is NADH dehydrogenase. This is complex 1. And it has what? It has 6 FES centers. So there is iron sulfate complex. So here the enzyme that is involved will be NADH or it is NADPH coenzyme Q reductase. So this becomes very important enzyme. When we talk about complex 2, it is succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase is the second complex and it has 3 iron sulfur centers. So we say 3 FES center. Here the enzyme that will be involved will be succinate coenzyme Q reductase. We have complex 3, that is cytochrome BC1 complex. So cytochrome BC1 complex is complex 3 and it has a specific FES center. Means there is a fixed FES center in cytochrome complex. Here there will be reduced coenzyme Q. Reduced coenzyme Q, that is cytochrome C reductase. Then we have complex 4. That complex 4 is nothing but it is also cytochrome complex only. It is cytochrome A3 complex. Here I can say it is also called as cytochrome oxidase.
complex. So this is complex 4. When I say complex 5, it is ATPase enzyme. This ATPase enzyme is also called as ATP synthase. When we look at the structure of ATP synthase, it has two important parts. The one part is head, another part is stalk. So when we look at the head is known as F1 particle, stalk is called as F0. F1 has certain parts like it has alpha, beta, gamma, delta and epsilon. These are the different parts. These are the subunits that you normally see in the head. And most important, the head of ATP synthase enzyme is hydrophobic in nature. So it is scared of water. F0 has oligomycin sensitive conferring protein. Oligomycin is one of the antibiotics. So we can say that it has F5 oligomycin sensitive conferring protein. So this is sensitive to oligomycin, the stalk. It's sensitive to this. And it has F6 also. So apart from F6, there is F5, there is F6 also. What is the role of this stalk? So I can say the stalk is basically related to proton channel. The H plus ion that moves from the intramembranous space into the matrix, it will enter through only ATPase complex. Most important point that always comes in your NEET exam is this. What is that point? Cytochrome C and cytochrome Q are mobile component of respiratory chain. It means they are not attached to any of the complex. They keep on moving on the membrane. So this is very important with respect to ETS. It's called as chemi-osmotic hypothesis. Now when we talk about chemi-osmotic hypothesis, there are certain points to be kept in mind. Point number 1, that 2H plus is responsible for synthesis of 1 ATP. Chemi-osmotic hypothesis takes place in both the chloroplast as well as it takes place in mitochondria. When we talk about chloroplast, so in the chloroplast, it takes place in the grana. To be very much specific, not in the grana, we can say thylakoid. And in the mitochondria, it is taking place at the inner membrane, or even you can say cristae. And in case of chemi-osmotic hypothesis, what is created? So we say there is always a proton gradient. Proton gradient means there is hydrogen ion concentration gradient. And most important point is proton flow, because most of the time students forget from where to where the protons are going to flow. So remember, it is going to flow from F0 to F1. So this becomes the ATP synthase enzyme. This is F0 and this is F1. So from F0 to F1, the hydrogen ion is going to move. And in this way it will enter. And once 2H plus has entered, energy will be generated. And based on that energy, what will happen? Based on that energy, ADP will combine with IP and it will become ATP. Next, most important point is, sometime in NEET exam they ask, one glucose is broken down to give you energy in the form of ATP. This is very easy, but the confusion starts here. Most of the time you get 36 ATP as the correct answer, and most of the time you get 38 ATP as the correct answer. So which one is correct? Whether one glucose breaks to give 38 ATP or 36 ATP. Now whether 36 or 38 ATP, this will be purely decided
by the shuttle system. There is a shuttle system involved, and this shuttle system will result in deciding whether it is 38 or 36. So the very first shuttle system here is malate aspartate shuttle. We have malate aspartate shuttle, and the second shuttle is glycerol phosphate shuttle. So when I use this word shuttle, shuttle is something that you never keep with yourself. You just keep on passing from one person to the another. Like we all have played badminton. So the shuttle is just thrown from one person to the another. Nobody catch the shuttle and keeps with themselves. So same thing is going to happen here. If there is malate aspartate shuttle going on, then it will result into how much? So we say it will result into 38 ATP. And if this glucose is following glycerol phosphate shuttle, that time it will result in synthesis of 36 ATP. When we talk about malate aspartate shuttle, what happens here? There is a transfer of electron from NADH2 in cytoplasm. Transfer of electron from NADH2 in cytoplasm. It occurs to NAD in mitochondria. So this is malate aspartate shuttle. Transfer of electron from NADH2 in cytoplasm occurs to NAD, that is in mitochondria. And this malate aspartate shuttle is the most efficient one. So if you are finding 38 ATP, it's just because the shuttle is following malate aspartate shuttle. The glucose has followed this. Next one we have glycerol phosphate shuttle. So this glycerol phosphate shuttle results in the synthesis of 36 ATP. So what exactly happens here? There is transfer of electron from NADH2 in cytoplasm occurs to FAD inside mitochondria. It means the electron goes to the FAD, and since it goes to FAD, it instead of synthesizing 3 ATP, it will synthesize only 2 ATP, and it is less efficient. Why? Because 2 ATP is less here. Let's talk about this. Now the shuttle system is going to vary. The shuttle system depends on the species and tissues involved. So let's put it in this way. Shuttle system depends on the species and tissues involved. So we have to find out when malate aspartate shuttle will take place and where glycerol phosphate shuttle will take place. So as far as malate aspartate shuttle is concerned, so it's 38 ATP. So remember, 38 ATP is synthesized in kidney, it is synthesized in liver, and it is synthesized in heart. When we talk about the 36 ATP, the 36 ATP is synthesized in case of muscle cells and nerve cells. So depending on the shuttle system, it will be decided whether 36 ATP or 38 ATP. Remember one thing in shuttle system, that inner mitochondrial membrane is impermeable. It means it will not allow the entry of NADH2. So it is impermeable to NADH2. Therefore, NADH2 formed
in glycolysis. Now things become different here. Therefore, NADH2 formed in glycolysis enters shuttle system. Now, if it enters the FAD, means it follows the glycerol phosphate shuttle, then we can say that it will synthesize 36 ATP. But if it follows the malate aspartate shuttle, it will result in 38 ATP. So it purely depends on this NADH2. And in glycolysis, we all know that 2 NADH2 was formed. There are some other pathways also to be kept in mind. So let us take it in this way. Other pathways which are important as far as NEAT is concerned. So I put it as other pathways. So in other pathways, very first that we all need to understand. It is Entner-Doudorff pathway. So it is Entner-Doudorff pathway. What is this Entner-Doudorff pathway? It is also called as glycolysis of bacteria. So if there is glycolysis going on in bacteria, it will follow Entner-Doudorff pathway. Example of the bacteria following this pathway, we have Pseudomonas. So Pseudomonas basically becomes the genus. Pseudomonas Saccharophila. So Saccharophila becomes the species. So instead of Pseudomonas Saccharophila writing big, I can write Pseudomonas fluorescens. Even I can write Pseudomonas lindeneri, and I put it as etc. So these are basically some other pathways. There is something called as PPP. This is again one of the important pathways. PPP logically means it is pentose phosphate pathway. That is PPP. The full form is pentose phosphate pathway. Now when I talk about PPP, so it is also called as hexose monophosphate shunt. So there are different names given to it. It is also called as hexose monophosphate shunt. What exactly you mean by this cycle? PPP, pentose phosphate pathway, or hexomonose shunt. This is nothing but it takes place in cytoplasm. Very important point, that pentose phosphate pathway, first of all, it takes place in cytoplasm, and at the same time it requires oxygen for entire process. So whenever we talk about entire process, and if it is phosphate pentose pathway, it will require oxygen for entire process. And most important, that this pentose phosphate pathway is nothing but it is the connecting link between photosynthesis and fat synthesis. So if the fat synthesis and photosynthesis, they are linked to each other, they are linked by the help of pentose phosphate pathway. There is something called as ETS. We all have studied about it. That is electron transport system or electron transport chain. But there is something called as resistance. It means the poison. There are some chemicals that will inhibit the growth, or that will inhibit the ETC to take place. So let's understand one by one. First is cyanide resistant pathway. So this cyanide resistant pathway, it plays an important role in preventing the flow of electrons. So the cyanide resistant pathway, what it does, it prevents flow of electron from cytochrome A3 to oxygen.
So if cyanide is present, it will not allow the electron to travel from cytochrome A3 to oxygen. Then there is one more that is called as a 2,4-DNP. 2,4-DNP, and the full form of DNP is dinitrophenol. And this dinitrophenol, it prevents synthesis of ATP. I can say prevents synthesis of ATP. And what it does, it directs electron from coenzyme Q to directly oxygen. So in between, one ATP synthesis is missed out. Then we have CO. We all know CO is nothing but it is carbon monoxide. Now this is also a kind of poison that will inhibit the ETS. So carbon monoxide, it functions like cyanide. Remember, carbon monoxide, it functions like cyanide. Then we have rotenone. Rotenone is also a type of poison if it is seen in human body or anywhere where respiration is taking place. This rotenone, it directly transfers electron from NADH, or even I can say FADH2 to coenzyme Q. Then we have one more that is called as antimycin A. These are all poisons affecting the ETS or the electron transport system. So in antimycin A, I can say it prevents, what it does, antimycin A, it prevents the transfer of electron from cytochrome B to cytochrome C1. So the electron, when it moves from B to C1, it is prevented by antimycin. And let's talk about the electron transport chain. There is no doubt how many ATPs are released. So definitely 3 ATP. But the ATP released is at different stages and different energy value. So 3 ATP is given by 1 NADH2. But each ATP has its own value. So let's look at the value. The first ATP, I can say the first ATP that is released, it is released when there is a transfer of electron from NAD to FMN, and this corresponds to the energy of 12.2 kilocalorie. The second ATP is released when there is a transfer of electron from cytochrome B. The electron is getting transferred to cytochrome C. Now this second ATP that is released, the energy value is 15.2 kilocalorie. And the third ATP that is released when there is a transfer of electron from cytochrome A to cytochrome A3, and when the electrons get transferred from cytochrome A to A3, the energy released, or the third ATP, the energy is 24.5 kilocalorie. So this is the energy value. When we talk about anaerobic, there is one more important word that is called as climacteric fruit. So respiratory, let's take it in this way. Respiratory climacteric fruit. What exactly it means? So respiratory climacteric of ripening of fruit, basically of ripening of fruit, just of ripening of fruit. So when we talk about this climacteric ripening of fruit, so it is just due to the production of excess amount of H2O2. So there is a climacteric ripening of fruit and leads to production of H2O2. Now H2O2 is nothing but it is hydrogen peroxide.
So H2O2 is nothing but it is hydrogen peroxide. That is what is released. So this H2O2, and there is one more thing formed that is called as superoxide. So we have H2O2, we have superoxide, and what it does, this enhances the oxidation and breakdown of membrane. The oxidation and breakdown of membrane. So this basically what is taking place, the enhancement and the oxidation and the breakdown of membrane is basically taking place because of a very important chemical. This entire stuff that we have studied just now, it is taking place because of cyanide. So cyanide is responsible for enhancing and doing everything. Then we have anaerobic respiration. So let's talk about anaerobic respiration. In anaerobic respiration, the amount of ATP produced will be 2. Anaerobic respiration, so I can say 2 ATP. When I put it in terms of kilocalorie, it is 52 kilocalorie of energy that is released. Or if I have to put it in joules, I will say 218.4 kilojoules. So this becomes the value of the ATP. There is one effect that is called as Pasteur effect. In respiration, we study what is Pasteur effect. We can say inhibition. Just understand this sentence, it's very important. Inhibition of sugar breakdown, inhibition of sugar breakdown due to presence of oxygen. Inhibition of sugar breakdown due to presence of oxygen under aerobic condition. It means there is more oxygen present, and since there is more oxygen, what happens? The sugar breakdown is inhibited. This effect is called as Pasteur effect. We have another term that is called as RQ. RQ stands for respiratory quotient. So this RQ is measured by Ganong's respirometer. So there is a device that is called as Ganong's respirometer that is used to measure the RQ. Most important is that the value of RQ at compensation point. Compensation point means the amount of carbon dioxide given out and oxygen taken in remains same. So at the compensation point is 0. And what was the value? So for aerobic respiration, the RQ was 1. For anaerobic respiration, the RQ was infinity. For fat, it was 0.7. For protein, it was 0.9. For organic acid, it was greater than 1. So this is RQ, that is also called as respiratory quotient. More accumulation of NADH2, more accumulation of NADH2 results in allosteric inhibition. So sometimes the process slows down because of what? So we say allosteric inhibition, or even you can call it as negative feedback. So allosteric inhibition or negative feedback is only due to accumulation of NADH2. So more NADH2 gets accumulated, that leads to allosteric inhibition. Deficiency of FES. If there is less iron present, then there will be a problem in the ETS. So I can say deficiency of Fe, that is iron, affects ETS because these are nothing but the electron carrier complex that transfers. So it is going to affect ETS, or even I can say it affects oxidative phosphorylation. So for ETS, the Fe ion basically becomes the most important component. What are cytochromes basically? Sometimes we put a question, what are cytochrome? So remember, cytochromes are nothing but these are iron
Fe porphyrin protein. Cytochromes are iron porphyrin protein. But the most important part is cytochrome A3. All the cytochrome will have iron, but it's the cytochrome A3 which is going to have iron as well as copper. Why it is required? So to understand this, we will put it in this way, that Fe in cytochrome A3, what happens? Fe picks up the electron. In this case, Fe picks up the electron. Fe will take the electron. The final electron will be taken by Fe. But through copper, Fe is going to pick up the electron, but through copper, it is handed over. It is handed over to oxygen. So it simply means one thing, that if I draw it in this way, there is Fe, there is copper, and there is oxygen. Fe cannot give the electron is received by Fe, but Fe cannot give the electron directly to oxygen. So this electron has to travel via copper to oxygen. That's why copper is present in the cytochrome A3. And cytochrome A3 is also called as terminal electron donor. The last electron was donated by cytochrome A3. Then there is something called as glyoxylate cycle. It is also called as adaptation of Krebs cycle. One very interesting question, that the potatoes in hilly areas or mountain areas, basically, potatoes in hilly areas are bigger in size as compared to normal potatoes. The hilly areas potatoes, they are bigger in size, and the reason for them being bigger in size is, in the hilly areas, first factor that plays an important role is the low temperature. The temperature is low. Since there is low temperature, therefore complete oxidation of glucose, does not take place. Since there is no complete oxidation of glucose, what happens? It gets accumulated, and it accumulates. As a result, the size increases. Therefore, I can say it accumulates, and since it accumulates in the potato, the size increases. So it accumulates, and the result, size of potato increases. So in hilly areas, basically, the potatoes are bigger in size because of this reason. There is something called as a TPP, that is thiamine pyrophosphate. This TPP is nothing but it is vitamin B1 derivative, because it has thiamine involved. The fruit showing higher rate of respiration during their ripening is climacteric fruit. So if somebody asks you what is climacteric fruit, so you will say climacteric fruits are nothing but fruits showing higher rate of respiration. And this higher rate of respiration is not throughout their life. So they show higher rate of respiration during their ripening. So when the fruits are getting ripened, that time it shows. And example for climacteric fruit, we have apple, we have banana. These are all examples of climacteric fruit.